करोड़ जो है वो इसे रखा गया था, जो डेटा मेरे सामने है। अब 2026 में क्या इसे बढ़ाना ज़रूरी है या इसे और असरदार बनाना, और इसके इम्पैक्ट को भी आप कैसे देखते हैं? मोटा मोटी हमारा एक्सपेक्टेशन है कि पिछले साल 11.11 जो कैपेक्स था उससे बढ़कर इस बारी करीब 12 लाख करोड़ का एस्टिमेट रहेगा कैपेक्स का। और इस बारी के कैपेक्स में जो हम लोग सारे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कई सालों से रोड्स, रेलवेज़, टेलीकम्युनिकेशन, इन तरह के क्षेत्रों में बहुत बड़ी खर्चा का सम आवंटन किया गया था, इस बारी सोशल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका जिक्र इकोनॉमिक सर्वे में भी किया गया था, उन सारी चीज़ों में खासकर किया जाएगा। सोशल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो किस तरह का, एक चीज़ आप सबसे पहले ही बात कर रहे थे, वेयर हाउसिंग, उस पर साथ में क्योंकि उसमें अभी कैपेसिटी आ गया है उस तरह का लोन, उस तरह का ग्रोथ अब्जॉर्ब करने के लिए, साथ में जिस तरह का रूरल लेवल या सेमी रूरल लेवल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स की ज़रूरत है कनेक्टिविटी का, उस तरह का चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी हो गया और वो उनके लिए गवर्नमेंट अभी खर्च कर सकते हैं। तो इन चीज़ों पर इस बारी खर्च करने की ज़्यादा संभावना है। और जो काफ़ी, जिसे कहते हैं, अगर जीडीपी की तरफ से देखें, एम्प्लॉयमेंट की तरफ से देखें, तो इनका इम्पैक्ट काफ़ी जल्दी इनका इम्पैक्ट आएगा। और साथ में अगर हम तीसरा चीज़ देखें कि सोशल की जो सेक्टर के ऊपर हम बात करते हैं कि हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर, इनमें कितना खर्च हो सकता है, तो इन दोनों सेक्टर्स में भी बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट्स के, गवर्नमेंट के इंटरेस्ट होने के हमें रुख दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से हम स्किलिंग इंडिया की बात कर रहे हैं, जिस तरह से हम स्टार्टअप इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए हमारा ये सारे पॉसिबिलिटीज़ हमारे सामने उभर के आ रहे हैं जी। एंड साथ में हम ये भी बता सकते हैं कि इंडिया के जो बजट है, वो बजट अभी ये जो गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बजट है, ये बजट ही प्रस्तुत करता है फाइनेंशियल एलोकेशन स्टेट्स को, जो अभी कुछ ही महीनों में सारे स्टेट गवर्नमेंट्स अपना बजट प्रस्तुत करेंगे, उनके लिए बन जाता है एक एलोकेशन पैटर्न कि उससे वो लोग अपना दायरा, अपना रुख तैयार कर सकते हैं। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स का जो कनेक्टिविटी रहता है, इस पर बहुत बड़ी लोगों का ध्यान नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी आज बजट प्रस्तुत करेंगी, उनके नंबर्स के हिसाब से ही सारे स्टेट्स में एक एक करके अपने बजट्स के रूपरेखा तैयार करेंगे। और लोगों के जनमानस के लिए साधारणतः स्टेट गवर्नमेंट के बजट में क्या हो रहा है वो ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि वो ज़्यादा ही अपने सारे कार्यक्रम में, अपने पॉसिबिलिटीज़ में, इनकम जनरेशन में, हर तरीके की चीज़ों में वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट बन जाता है। सो इसलिए ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का ये जो दोनों बजट प्रक्रिया है, हम इन दोनों को एक साथ में देखना चाहिए। साथ में थर्ड पहलू है कि इसी बीच रिजर्व बैंक जो इसी हफ्ते में जाके अपना मॉनेटरी पॉलिसी का रुख जाहिर करेंगे, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में क्या एस्टिमेट रहता है। तो ये तीनों चीज़ों को, सेंट्रल गवर्नमेंट बजट, आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी है और स्टेट गवर्नमेंट्स के जो बजट्स, ये तीनों को मिला के हम एक बजट प्रक्रिया को समझ सकते हैं, ताकि वो, क्योंकि उससे पता चलता है कि देश के लोगों के लिए किस तरह का सिचुएशन बन सकता है। जी हाँ, और बड़ी बात यह है कि अगर सुबह से अभी तक के घटनाक्रम पर नज़र डालें, मैं प्रतिबिंब शर्मा और प्रीति हमारे साथ मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं, और बजट का दिन है, बहुत ही विशेष दिन है। और घटनाक्रम की बात करें तो वित्त मंत्री आज सुबह निकली, वित्त मंत्रालय पहुंची, वहां से उन्होंने अपना वो बजट का रेड कलर का बहुत ही अलग, बहुत ही विशेष जो है एक बजट पैकेट लिया, वहां से राष्ट्रपति भवन पहुंचे और राष्ट्रपति ने भी उनको वहां पर दही शक्कर खिलाया। बिल्कुल, और दही शक्कर खाने के बाद संसद भवन परिसर पहुंच चुकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वित्त राज्य मंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं, और जैसा हमने कहा कि तस्वीरों में भी हम देख रहे थे, वो लाल रंग के कवर में लिपटा हुआ टैबलेट, जिसमें से ठीक 11 बजे जब संसद की कार्रवाई शुरू होगी, उसके बाद देश के सामने पेश होगा आम बजट 2026-2027। सारी औपचारिकताएं फिलहाल पूरी हो गई हैं, और तस्वीरों में जो हम देख रहे हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को राष्ट्रपति से मंजूरी मिली, राष्ट्रपति को कॉपी सौंपी गई है इस आम बजट की, और इसके बाद अब संसद भवन परिसर पहुंच चुकी हैं वित्त मंत्री। जी हाँ, ये उस समय की तस्वीरें हैं जब संसद भवन पहुंची
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ये देश के लिए बहुत ही विशेष अवसर है और स्वयं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन मौका है, क्योंकि रिकॉर्ड 9वीं बार वो आम बजट पेश करने वाली हैं 11 बजे। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट लेकर पहुंची हैं संसद भवन और कैबिनेट की विशेष बैठक चल रही है। इस बजट को लेकर वहां से मोहर लगेगी और उसके पश्चात लोकसभा के भीतर जाकर पेश किया जाएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आम बजट 2026-27। प्रतिबिंब इस बार देखिए तो एक और रिकॉर्ड है, 9वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट तो पेश करी नहीं है। रविवार का दिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि रविवार को बजट पेश हो रहा है, तो मुझे लग रहा है आम जनता आज रविवार के दिन थोड़ा छुट्टी वाले मूड में होती है, इसलिए और ध्यान से आज बजट की बातों को सुन पाएगी, समझ पाएगी, देख पाएगी। और ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और तमाम जो खास मेहमान हैं वो भी इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस समय हम अगले 1 घंटे में चर्चा करेंगे कि 11 बजे जो पिटारा है या जो कहें अब टैबलेट के रूप में हमारे सामने है, क्योंकि डिजिटल भारत, एक विकसित भारत का स्वरूप बहुत तेजी से पिछले कुछ सालों में हमने बदलता देखा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जनार्दन मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, जो कि लोकसभा के सांसद हैं। जनार्दन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे साथ नरेश बंसल जी भी जुड़े हुए हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रियदर्शी दास, एसोसिएट प्रोफेसर RIS हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा सिद्धार्थ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एडिटर है टाइम्स ऑफ इंडिया के। सिद्धार्थ जी, आपका भी स्वागत और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा डॉक्टर रंजीत मेहता, जो कि फेलो हैं IVLP, CEO एंड सेक्रेटरी जनरल, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। डॉक्टर रंजीत मेहता, शुक्रिया आपका और स्वागत संसद टीवी में। जी हाँ, और जनार्दन जी, बहुत ही विशेष अवसर है। वित्त मंत्री के तौर पर 9वां बजट पेश कर रही हैं निर्मला सीतारमण, और जो मेरी सहयोगी प्रीति ने कहा कि एक इतिहास रचा जा रहा है, परंपरा को पीछे छोड़ते हुए रविवार को पहली बार बजट पेश किया जाना कितना महत्वपूर्ण है? निश्चित रूप से जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बजट का पहलू समय और तिथि परिवर्तित की, आवाज़ विशेष परिस्थिति में, चूँकि आज के ही दिन 1 तारीख को ही बजट पेश होने की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी, इस वजह से आज रविवार होते हुए भी उस तिथि के अनुरूप बजट पेश किया जा रहा है। और निश्चित रूप से आज एक संदेश है कि कोई भी दिन अब अवकाश का दिन नहीं रहेगा है। हर व्यक्ति को देश का अपने लिए एक एक क्षण, एक एक पल, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान है, हर व्यक्ति को अपना योगदान देना है, और इसी क्रम में आज ये बजट पेश किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है नरेश जी, प्रधानमंत्री का मूल मंत्र है ना रुको, न ठहरो, ना आराम करो, और उसी का एक बेमिसाल ये उदाहरण है रविवार को देश का बजट पेश करना। निश्चित रूप से स्वतंत्रता के बाद पहली बार रविवार को बजट पेश हो रहा है, और प्रधानमंत्री जी ने ऐसे बहुत से मिथकों को तोड़ा है। सबसे पहला मिथक तो यही तोड़ा गया था कि पहले ब्रिटिश संसद के हिसाब से बजट पेश होता था रात शाम को 5 बजे, क्योंकि वहाँ दिन के 11 तब बजते थे। 75 सालों में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको बदला, और अब 1 फरवरी को हमारे हिसाब से 11 बजे बजट आता है। उसी में आज का ये रविवार का दिन भी है। देश की जनता इसको बड़े आराम के साथ देखेगी, समझेगी, परखेगी और देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान देगी। बिल्कुल। प्रियदर्शी दास, अगर मैं आपसे समझूं, क्योंकि बहुत सारे संकेत हमें मिले आर्थिक सर्वेक्षण से, और प्रधानमंत्री ने जिस तरह की बातें बजट आने से पहले कही हैं, रिफॉर्म पर उन्होंने खासा जोर दिया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि एक जो रिफॉर्म एक्सप्रेस पिछले कुछ सालों में चल गई है, हो सकता है उसे ही और गति दी जाए बजट के जरिए। क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल सही बोल रहे हैं प्रीति जी, क्योंकि आप देखेंगे पिछले 8 बजट्स, उसमें 2 चीजें खास करके उभर के आती है। एक है कि जो कंट्री का जो मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान है, जो स्ट्रैटेजी है, उसका जिक्र करना। दूसरा है कि जो एनुअल स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू है, उसमें उस प्लान को किस तरह एक रूपरेखा देना। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग,
दोनों एस्पेक्ट्स पर ध्यान दिया गया है। जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का बात बोलते हैं, इकोनॉमिक सर्वे में भी उसका इंडिकेशन हुआ है कि एफडीआई को अट्रैक्ट करना, बिजनेस एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए जो पुराने जो सारे रूल्स रेगुलेशन उसको रिपील करना, सिंप्लीफिकेशन, रैशनलाइजेशन, स्ट्रीमलाइनिंग, ये सब एरिया में काफ़ी सारा प्रोग्रेस हुआ है और इसको प्रॉपर तरीके से लोगों में और बिजनेस कम्युनिटी में कम्युनिकेट किया गया है। तो ये एक अच्छा डायरेक्शन हुआ है। जहाँ तक ईज ऑफ लिविंग और सोशल प्रोटेक्शन का बात है, उसमें सारे बजट में आप देखेंगे कि लोगों का, आम लोगों को जो जो सुविधाएं मिल सकती है, जो लाभार्थी है, जो अलग अलग प्रोग्राम है, उसमें उसका कवरेज बढ़ाना, उसको इफेक्टिव बनाना, ये सब चीज़ें, चाहे वो गैस कनेक्शन हो, चाहे वो एनर्जी प्राइसेस हो, बाकी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, तो पूरी तरह से जो रिफॉर्म प्रोसेस का दो पहलू है, जिसमें हम बिजनेस को प्रमोट करते हैं, देश का जो तीनों सेक्टर है जिसमें से हमारा सोर्सेस ऑफ ग्रोथ रहता है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, उसमें कैसे बुनियादी ढांचे में हम लोग परिवर्तन ला सकते हैं, कैपेक्स को बढ़ाना और वो सिंगल विंडो सिस्टम में काम करना, ये सब जो प्रोसेस चल रहा है, ये रिफॉर्म प्रोसेस का ही हिस्सा है। और उसमें हम अभी 1 घंटे में बिल्कुल उसी का एक सिंबलिक प्रेजेंटेशन देखेंगे कि किस तरह वो पेज को और ज्यादा बढ़ोतरी मिलती है। जी हाँ, 1 घंटे के बाद जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सिद्धार्थ, अगर बात करें आर्थिक सर्वेक्षण की, उसमें बेरोजगारी दर भी घटी है पिछले वित्त वर्ष में, और माना जा रहा है कि जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है सरकार का, उस पर निवेश किया जा रहा है, वो एक बड़ी वजह है जो रोजगार बढ़े हैं और बेरोजगारी दर कम हुई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस बार भी आवंटन बढ़ेगा, उस पर ज्यादा जोर रहेगा बजट में, माना जाए? जी बिल्कुल। यदि हम पिछले 6 वर्षों के बजट को देखें तो लगातार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट होता है, चाहे वो रोड बनाने में या रेलवे में या अन्य क्षेत्रों में, उसमें वृद्धि होती जा रही है। और उम्मीद है कि इस साल भी उसी पथ पर हम चलेंगे और वृद्धि इस बार पुनः होगी, रोड बनाने के लिए, रेलवेज के लिए, वाटर रिसोर्सेज की तरफ में। तो इन सब एरियाज में काफी ध्यान रहेगा। ये 2 चीजों पे मैं और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पिछले वर्ष जो है सरकार ने पहले इनकम टैक्स में बचत दी, जिसके वजह से काफी कंजम्पशन डिमांड बढ़ा है। उसके अलावा जो है नवरात्र के समय में जीएसटी का भी रेट दर काटा गया और इससे भी कंजम्पशन का बूस्ट मिला है। और यदि आज जो आंकड़े आए हैं जीएसटी के वो देखें तो उसमें 6% से अधिक की वृद्धि है। ये दर्शाता है कि जो टैक्स की दरों में जो कमी हुई है उससे कंजम्पशन बढ़ा है और रेवेन्यू पर या टैक्स कलेक्शन पर उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है। तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, ये दोनों इंजन जो है चल पड़े हैं और कंजम्पशन से और डिमांड बढ़ेगा, डिमांड से और इन्वेस्टमेंट होगा और आने वाले दिनों में निजी क्षेत्र भी निवेश करना उम्मीद कर रहे हैं कि वो बड़े स्तर पे करेगा। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से डॉक्टर रंजीत एफटीए हो रहे हैं, यूरोपीय संघ के साथ हुआ, ब्रिटेन के साथ हुआ, उस तरीके से विनिर्माण के क्षेत्र पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। इसलिए माना जा रहा है कि एमएसएमई के लिए भी कुछ राहत, कुछ छूट इस बार के बजट में संभव है। बिल्कुल। डॉक्टर मेहता हमारे साथ फिलहाल प्रतिबिंब नहीं मौजूद है। नरेश जी और जनार्दन जी, आप दोनों से हम थोड़ा ज़्यादा बातें करेंगे अभी, क्योंकि आप लोग को फिर संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेने में जाना है। नरेश जी, एक दौर को अगर हम समझें, देखें, वैश्विक माहौल को समझें, अनिश्चितताओं से भरा दौर है। अब अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बात करें तो मंदी की बात होती है, अनिश्चितताओं की बात होती है, जबकि भारत जो विजन लेकर चल रहा है वो रिफॉर्म्स का विजन लेकर चल रहा है और भारत में कहीं ना कहीं स्थिति स्थिर है और दुनिया भारत की अर्थव्यवस्था को एक बहुत आशा भरी नजर से देख रही है, बहुत कुछ सीख रही है, समझ रही है। तो ऐसे में बजट में इसका प्रतिबिंब दिखना या बजट में हम कहें पॉलिसी को लेकर खास तौर से अच्छे संकेत मिलना, इसकी कितनी उम्मीद? निश्चित रूप से, क्योंकि मोदी जी का लक्ष्य भी है कि रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, पूरा देश उसमें लगा है और प्रारंभ से ही अनेक प्रकार के रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म, सरलीकरण, इजी डूइंग बिजनेस, यहाँ तक कि इजी लिविंग,
इस सब पर फोकस किया जा रहा है। और इसमें भी क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था आज विश्व के अनिश्चितता के माहौल में भी स्थिरता के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, 7% के आसपास हमारा जीडीपी है, तो उसको निश्चित रूप से बनाए रखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि 2047 का विकसित राष्ट्र का लक्ष्य प्राप्त करना है, तो इसलिए जो हमको उससे लाभ मिला है, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप, स्टार्टअप, इन सब से जो लाभ मिला है, एमएसएमई को हमने बूस्ट किया है, उस पर, उस सेक्टर पर और अधिक फोकस इस बजट में होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि हम देख रहे हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र पर भी काफ़ी निवेश किया जा रहा है, विशेष रूप से रिन्यूएबल एनर्जी पर। जनार्दन जी, क्या माना जाए, इसको और ज़्यादा विस्तार दिया जाएगा इस बजट में? निश्चित रूप से जिस तरह से एनर्जी के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट हुए हैं, और पहले तो हमारी अभी भी कोयले पर अधिक निर्भरता है, लेकिन उसके बावजूद भी नवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, इस पर जो जिस तरह से ध्यान दिया गया है, और वितरण के मामले में जिस तरह से ध्यान फोकस किया गया है, उससे आज आप देखिए कि 24 घंटे बिजली, चाहे वो गांव हो, चाहे सड़क, चाहे शहर हो, 24 घंटे बिजली हर जगह उपलब्ध है। और ये सब कुछ बिना निवेश के संभव नहीं हो सकता था। आज कोयले की कोई कमी नहीं, हमारे पास लगभग 11 महीने के कोयले का स्टॉक उपलब्ध है। तो ऐसी परिस्थिति में विद्युत के क्षेत्र में जिस तरह का काम हुआ है, और एक ग्रिड बना करके पूरे देश को एक साथ सप्लाई चेन में संबद्ध किया गया है, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। और ये मोदी जी के विजन का ही परिणाम है कि आज हम गांव में छोटे अंदर चले जाइए, मैं तो रिमोट एरिया का से आता हूँ, वहाँ भी 24 घंटे बिजली गाँव में एक एक घाड़ी में उपलब्ध है, एक टोले में उपलब्ध है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। और सिद्धार्थ, एक चीज़ अगर हम समझे, ठीक है, बजट से जो निकलेगा, लेकिन एक डिसिप्लिन की बात होती है। जब हम फिस्कल डेफिसिट वर्सेस ग्रोथ की बात करते हैं, तो ये आज की बहस नहीं है, ये हमेशा चलती रही बहस है। लेकिन अब अगर हम भारत के थोड़े से हालिया अनुभव को देखें, समझे, तो क्या इस मामले में भारत परिपक्व होकर फैसले लेता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। हम अपने हित में जो निर्णय लेने हैं, वो सारे निर्णय हम ले रहे हैं। और चाहे वो कहाँ से हम इंपोर्ट करें या किस तरीके से हम अपने इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करें, वो बजट के माध्यम से हो या अन्य माध्यम से, जैसे बता रहे हैं कि सरलीकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। और यदि हम पिछले कुछ वर्षों को देखें तो एक बजट में ट्रांसपेरेंसी आ गई है, जो काफी चीजें जो कि अगली पायदान के रूप में होता है। इस बार का बजट भी भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाने वाला होगा। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। जैसा कि हमने टाइमलाइन बताया कि सुबह वित्त मंत्री वित्त मंत्रालय के लिए निकली, वहां से बजट लिया, बजट के बाद राष्ट्रपति एक्सप्रेस, प्राइम मिनिस्टर का रिफॉर्म एक्सप्रेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और भारत का बजट को आज के दिन में विश्व देखता है, पूरा देखता है कि भारत का बजट में क्या होगा। तो सब हम लोग अच्छा से उम्मीद के साथ आज बजट सुनेंगे। जी बिल्कुल। बिल्कुल, जैसा प्रतिबिंब आप कह रहे हैं कि तेजी से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और हर मंत्रालय, हर मंत्री और एक तरह से हर सेक्टर में कहूं अपने लिए उम्मीद लगाए बैठा है। बहुत दिलचस्प तस्वीरें हैं, मैं चाहूंगी एक बार आप उन तस्वीरों को दिखाएं, क्योंकि वो जो रिकॉर्ड बनने वाला है आज 11 बजे के बाद, लगातार 9वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बजट पेश करेंगी। और ये अपने आप में एक मैं कहूं गर्व से भरा पल भी होगा, जब पूरी दुनिया देखेगी कि भारत सिर्फ विमेन लेड डेवलपमेंट की बात ही नहीं करता, बल्कि उसे साकार करता है और साक्षात अपनाता है। तो जब हम देखेंगे कि महिला राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद अब एक महिला वित्त मंत्री 9वीं बार इस देश में बजट पेश करेंगी, तो अपने आप में एक बेहद खुशनुमा पल होगा। और सबसे बड़ी बात है, किरण रिजिजू जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है, पहले पूरे देश की निगाह रहती थी आम बजट पर, अब पूरे विश्व की निगाहें जो हैं भारत के बजट पर है कि भारत के बजट में क्या कुछ होता है। जिस तरीके से पूरे विश्व का अगुवा बनकर सामने आया है भारत। और हमारे साथ लगातार प्रियदर्शी भी जुड़ी हुई है। प्रियदर्शी, क्या पूरा विश्व देख रहा है भारत के बजट को? बिल्कुल देख रहा है। कि आप अभी अगर रिसेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया का देखिए, जो इकोनॉमिक सर्वे भी बता रहे हैं, उससे पहले हम जो एसओ का डेटा भी देखें, जो रेजिलियंस इंडियन इकोनॉमी ने डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है डिस्पाइट ऑफ सेवरल
जो टैरिफ का जो थ्रेट है और जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, उसके बावजूद जिस तरह का हमने ग्रोथ अचीव किए हैं, जिस तरह का मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल अभी है, वो एक इंडिकेट करता है कि इंडियन इकोनॉमी कितना इम्पोर्टेंट है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। नॉट जस्ट कि एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, बट इसका इतने बड़े आबादी के साथ इकोनॉमी को मैनेज कैसे किए हैं इस तरह का जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में, तो वो जरूर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसा इनका पॉलिसी मैनेजमेंट रहा है, क्रेडिबल रहा है, सो दैट कि ये रिजल्ट अचीव कर पाए। दूसरा ये है कि जो इमर्जिंग मार्केट लीडरशिप में जो इंडिया और ग्लोबल साउथ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंडियन लीडरशिप को अभी देखा जा रहा है पिछले एक दशक से, तो वो भी एक एंगल पहलू डेमोन्स्ट्रेट करता है कि इंडिया क्या कर रहा है। तो उससे हमको कोई लेसन मिल सकता है क्या, कोई हम उसको रेप्लिकेट करने का स्कोप मिल रहा है क्या। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, फील्ड है, डिजिटल इकोनॉमी हो, यूपीआई हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, सोशल सेक्टर में जो मुद्रा स्कीम का जो आउटरीच हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, ये सारे फ्रंट में आप देखेंगे जो इंडिया का जो पिछले कई सालों से जो उपलब्धियां रहा है, वो तो मॉडल बन के उभर रहा है। तो जो आप बोल रहे हैं उसमें कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, पक्का उसको देखेंगे और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कमेंट्स भी बहुत जल्दी आ जाएगा जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर का स्पीच खत्म होगा। बिल्कुल, और ये वही दिलचस्प तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। ये हम एक तरह से कंपैरिजन भी देख पा रहे हैं और अलग अलग सालों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जो बजट पेश किया है उसकी तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं। डॉक्टर रंजीत मेहता भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मेहता, अगर उद्योग जगत की अपेक्षाओं आकांक्षाओं को समझने की कोशिश करें तो उद्योग जगत की सबसे बड़ी ज़रूरत है नीति स्थिरता, पॉलिसी में स्टेबिलिटी हो, जिसकी उम्मीद हमेशा उद्योग जगत करता है। अब किस तरह के लॉन्ग टर्म इंडिकेशंस आपको लग रहा है कि इस साल बजट में मिल सकते हैं? और क्योंकि एक बड़ी चुनौती वैश्विक स्तर पर बनी हुई है और मंदी की जब हम बात कर रहे हैं, वैश्विक मांग में सुस्ती देखने को मिल रही है, ऐसे में उद्योग जगत इस बजट के जरिए किस तरह के प्रावधानों की उम्मीद कर रहा है? थैंक यू। इनफैक्ट जो बजट है, हम डेफिनेटली ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एक पॉपुलिज्म का बजट होगा। जो बजट होगा एक प्रायोरिटीज पे फोकस करेगा और एक सर्टेनिटी पे फोकस करेगा और कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसीज पे फोकस करेगा। आज अगर सबसे बड़ा हमारा फोकस रहेगा, डेफिनेटली सरकार ने जिस तरीके से एक फिस्कल डिसिप्लिन को, ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए, जो ग्रोथ जो है हमारे बजट का सेंट्रल पिलर होगा। अगर ग्रोथ में भी सिर्फ एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ की हमें संभावना, और ये हमें जरूर हम कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ होगा, और उस पे कैसे सरकार जो है फिस्कल प्रूडेंस को ध्यान में रखते हुए सारे प्रायोरिटीज को अपने सेट करेगी। और तीन मुख्य बातों पे हमें उम्मीद है कि फोकस रहेगा, कैसे देश में कैपिटल फॉर्मेशन हो और कैसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़े, और इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ पे डेफिनेटली फोकस रहने की उम्मीद है। क्योंकि जो ओवरऑल जो एम्प्लॉयमेंट जहां तक जनरेट करने की बात है, तो एम्प्लॉयमेंट आप या तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से जनरेट कर सकते हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जनरेट कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि एमएसएमई जो इस टाइम जो ग्लोबल ऑर्डर एक चल रहा है, जो टैरिफ वॉर्स पूरे विश्व में अभी, इनफैक्ट अमेरिका का जो टैरिफ एक रहा है नीति, उसकी वजह से जो डिस्ट्रप्शन आया है, सरकार ने प्रोएक्टिव अप्रोच लेते हुए कि कैसे यूके के साथ, अभी ईयू के साथ इतना बड़ा एफटीए किया है और ओमान के साथ, न्यूजीलैंड के साथ ये जो एफटीए करे हैं, अब इसमें जो है हमारे एमएसएमईज को किस तरीके से हैंड होल्डिंग करके नए बाजारों में उनको शुरू में, डेफिनेटली आप एक मार्केट में ऑलरेडी कई दशकों से हैं और उसके बाद वहां पे डिस्ट्रप्शन होके आप नए मार्केट जब खोजते हैं, नए मार्केट में आप एंट्री करते हैं, तो डेफिनेटली आपको शुरू में मार्केट एस्टेब्लिश करने में, अपने क्लाइंट डेवलप करने में टाइम लगता है। तो उसमें जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड के थ्रू किस तरीके से एमएसएमईज को हैंड होल्डिंग मिले और किस तरीके से एमएसएमईज को जो इंटरनेशनल फेयर्स होते हैं और जो अपने मार्केट को उनको मार्केट एक्सेस दिलाने में जो एक सहायता है, यही हमें सरकार से उम्मीद है। एट द सेम टाइम जो ईयू के साथ हमारा एफटीए हुआ है,
इसमें डेफिनेटली सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि हमारे देश में 70 मिलियन से ज्यादा एमएसएमईज हैं और ये बहुत छोटे व्यापारी हैं। जी हाँ। और जब हम कॉम्पिटिटिवनेस की बात करते हैं ईयू जैसे एडवांस इकोनॉमी में जाने पे, तो डेफिनेटली सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन ट्रांजिशन में एक बहुत बड़ा फैक्टर आएगा। किस तरीके से उनको ग्रीन ट्रांजिशन में मदद मिले, किस तरीके से उनको ज्यादा सस्टेनेबल बनाने में एक इकोसिस्टम बनाया जाए जिससे कि उस ग्लोबल मार्केट में वो एंट्री कर सके। और मुख्य बात यह है कि एग्रीकल्चर जो है हमारे पूरे इकोनॉमी का एक बहुत अहम हिस्सा है, और हमारी एग्रीकल्चर में सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे हम डाइवर्सिफाई करें एग्रीकल्चर में। उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है, और वहां पे भी टेक्नोलॉजी, क्योंकि जब आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, पैदावार बढ़ाना चाहते हैं किसानों की, तो डेफिनेटली जमीन तो हमारी लिमिटेड है। हम किस तरीके से जो है उनको टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको हम बढ़ा सकें, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे डेफिनेटली इसमें ज्यादा और सरकार का इस पर लगातार जोर भी है। और हमने तस्वीरें दिखाई थी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच चुके हैं संसद भवन में और लगातार केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं। जेपी नड्डा जी आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, वो भी प्रवेश द्वार पर इस वक्त आप देख सकते हैं संसद भवन के, और वो अंदर जाते हुए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर रक्षा मंत्री की बात निकली है, तो डिफेंस वो सेक्टर है जिसमें लगातार जो है विनिर्माण के क्षेत्र में बहुत जो है मजबूती आई है, और प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी ये क्षेत्र खोल दिया गया है। और इससे पहले बस पृथ्वी में 2 मिनट, क्योंकि ये तस्वीरें हम बार बार क्यों दिखा रहे हैं, तस्वीरों को समझिए। 9वीं बार आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बजट पेश करेंगी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। और ये साल दर साल की तस्वीरें देख रहे हो, ये ट्रांजिशन भी समझिए कि जब पेपर से होता हुआ 2021 में टेक्नोलॉजी बदली, पेपरलेस पार्लियामेंट की जब हम बात करते हैं, 2021 वो साल रहा जब टैबलेट के जरिए बजट पेश करना शुरू हुआ। और ये जो आप समझ रहे हैं आंकड़े, 8 बार लगातार बजट पेश किया, अब 9वीं बार वो साल होगा जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बजट पेश करेंगी। इसके पहले ये रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम जरूर है, लेकिन लगातार उन्होंने बजट पेश नहीं किए 10 बार, 6 बार उन्होंने लगातार बजट पेश किए। और पहली वित्त मंत्री, सिर्फ महिला नहीं, देश की पहली वित्त मंत्री बनेंगी निर्मला सीतारमन, जो लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी। मनमोहन सिंह ने 5 बार बजट पेश किया, और इसके अलावा जो अलग अलग वित्त मंत्री रहे हैं उनके नाम भी ये रिकॉर्ड 5 बार रहा, और 9वीं बार अब ये रिकॉर्ड वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के नाम। जी हाँ, और ये तस्वीर इसलिए भी महत्वपूर्ण है, नारी शक्ति की परिचायक हैं ये तस्वीरें, और नारी शक्ति के रूप में प्रीति भी यहाँ पर विराजमान हैं स्टूडियो में, और बार बार इन तस्वीरों के बारे में जिक्र कर रही हैं। और मैं बात कर रहा था आपसे जनार्दन जी, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, जो है विचारों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, तो एक जनप्रतिनिधि के नाते आपके मन में क्या आता है कि क्या कुछ होना चाहिए, पहले 3 बिंदु या 3 क्षेत्र जिन पर जोर होना चाहिए एक जनप्रतिनिधि के तौर पर इस बजट में? सबसे पहली जो एक तो खेती का जो मामला है, और जिस तरह से कृषि का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है, पशुधन के मामले में दूध के उत्पादन में हम सबसे आगे हो गए हैं, मछली उत्पादन हो रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर गाँव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से, और ये ग्राम पंचायतों को सशक्त करने के लिए जिस तरह से एक नया, जी हाँ, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि घटनाक्रम बदल रहा है, प्रधानमंत्री भी पहुंच चुके हैं संसद भवन, आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है, और आपको बता दें एक औपचारिकता होती है जब प्रेसिडेंट को ये बजट की कॉपी सौंपी जाती है, उनकी मंजूरी के बाद कैबिनेट की मंजूरी मिलना बजट को ज़रूरी है। ये तमाम औपचारिकताएं हैं जो निभाई जाती हैं, और कैबिनेट की मंजूरी के बाद जब 11 बजे संसद की कार्रवाई शुरू होगी तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन लोकसभा में बजट पेश करेंगी। और जैसा मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, नया इतिहास बनाएंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, देश की पहली ऐसी वित्त मंत्री जो लगातार 9वीं बार आज बजट पेश करेंगी। जी हाँ, और एक और इतिहास आज बन रहा है, पहली बार आम बजट देश का रविवार के दिन पेश किया जा रहा है। आप कुछ कह रहे थे जनार्दन जी? हाँ, तो वो दूसरा जो पानी का संकल्प है, आप गाँव में या कि जिस तरह का पीने का पानी का भी शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है लोगों को, उसके लिए पानी की आवश्यकता है, हर घर को शुद्ध जल मिले, उसके लिए
जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल का काम चल रहा है और लगभग 12 करोड़ परिवारों में ये पहुंच भी चुका है। पिछले साल 1 करोड़ से ज़्यादा परिवारों में पानी पहुंचा है। तो मेरी प्राथमिकता तो मैं जिस इलाके से आता हूं और देश के लिए भी वो आवश्यक है, कृषि के क्षेत्र में उत्पादन की वृद्धि और उसकी गुणवत्ता, पौष्टिकता, उसके साथ ही साथ दूध उत्पादन, मछली उत्पादन और शुद्ध जल और मकान लोगों को रहने के लिए, जिस तरह से 4 करोड़ मकान दिए गए हैं, बनाए गए। पिछले वर्ष ही 32 लाख मकानों का निर्माण हुआ है। तो अगर हमने खेती बढ़ा दी, दूध बढ़ा दिया, पानी दे दिया लोगों को, शुद्ध पानी और मकान मिल जाए, तो इससे स्वास्थ्य सुविधाओं का भी तेज़ी से विस्तार हुआ है। जिस तरह से हर ज़िले को एक मेडिकल कॉलेज देने का अभियान चल रहा है, उससे स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत भारी वृद्धि होने की संभावना है। और इसके साथ ही जिस तरह से आयुष्मान भारत के तहत लगभग 11 करोड़ लोगों को राहत मिली है, पिछले साल ही लगभग 1.5 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिला है। तो इस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी जिस तरह से नए नए द्वार खुल रहे हैं और विदेशों से जो हमारा टाई अप चल रहा है, ये जो स्वतंत्र एग्रीमेंट हो रहे हैं और अभी EU के साथ जिस तरह के शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए को प्राथमिकता दी गई है, इससे मैं समझता हूँ कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि, पानी, आवास, इन सारे चीज़ों की आवश्यकताएं हैं। और देश का नेतृत्व, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है, वो मैं समझता हूँ कि देश की आकांक्षाओं के अनुरूप, गरीबों की आकांक्षाओं के अनुरूप, ग्रामीणों की अपेक्षाओं के अनुरूप और जो स्लम्स एरिया है उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप ये देश आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। नरेश जी, इसके अलावा हमने देखा जब किसानों की बात हुई, महिला, युवा और खासकर स्किल डेवलपमेंट को लेकर, क्योंकि तेजी से अब डिमांड बढ़ रही है मार्केट में, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हम हो रहे हैं, AI अब बहुत तेजी से मैं कहूँ एक अपॉर्चुनिटी बनकर आ रहा है, जिसे कई लोग एक चैलेंज के रूप में भी देख रहे हैं। तो स्किल डेवलपमेंट पर और खासकर युवाओं की ट्रेनिंग पर फोकस ये कितना अहम रहने वाला है? निश्चित रूप से स्किल डेवलपमेंट पर पिछले बार के बजट में भी बड़ा फोकस था। 1000 ITI को अपग्रेड करने का काम और युवा कौशल विकास में इंडस्ट्री के अंदर उनको ट्रेनिंग हो, इसके लिए ट्रेनिंग सपोर्टेड स्कीम लाई गई युवा कौशल में और अनेक हजारों युवकों को उसका लाभ मिला है। परसों ही श्रम मंत्री जी ने पार्लियामेंट में बताया कि पिछले वर्ष 2 करोड़ 20 लाख लोगों को रोजगार मिला है। तो इसलिए आवश्यकता स्किल लेबर की, स्किल एम्प्लॉयमेंट की ज़्यादा है, क्योंकि विश्व के साथ compete करना है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, तो इंडस्ट्री के अनुरूप टैलेंट मिले, इसके लिए बहुत फोकस पिछले बजट में भी था और इस बजट में भी होगा। स्किल के साथ साथ शिक्षा भी वो क्षेत्र है जिस पर जोर है सरकार का, और उसको लेकर भी बड़ा रिफॉर्म जो है NEP के माध्यम से किया गया है। लेकिन फिर भी जो विशेषज्ञ हैं शिक्षा क्षेत्र के, जनार्दन जी, उनका मानना है कि GDP का तकरीबन 6% तक इस पर खर्च होना चाहिए, उससे थोड़ा सा दूर हैं। 6% तो नहीं, लेकिन कुछ बढ़ने की संभावना। निश्चित रूप से जिस तरह से शिक्षा का और ज्ञान के नए क्षेत्र विकसित बढ़ रहे हैं और केवल अब शिक्षा कुछ सीमित पाठ्यक्रमों तक सीमित नहीं रह गई है। अब तो नई शिक्षा नीति के माध्यम से विषयों का अध्ययन सरल हुआ है। तो इस तरह और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी तेज़ी आई है, विश्वविद्यालय बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, महाविद्यालयों की संख्या दुगनी से ज़्यादा हुई है। तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ वृद्धि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल।
तो शिक्षा पर भी खास फोकस रह सकता है। और जनार्दन जी और नरेश जी, फिलहाल हम आप दोनों को शुक्रिया कहेंगे, आप लोग हमारे साथ जुड़े, समय निकाला, आप कार्रवाई में हिस्सा लेना है, इसलिए आप लोग को इजाज़त देना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने। शुक्रिया के साथ साथ शुभकामनाएं भी। धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण दिन है देश के लिए, और जैसा कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं और हमारे विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि केवल देशवासियों का नहीं, पूरे विश्व का ध्यान हमारे आम बजट पर है। कुछ देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 9वीं बार लगातार आम बजट पेश करेंगी देश का, और इस समय कैबिनेट की बैठक चल रही है और कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के पश्चात संसद भवन के अंदर लोकसभा के भीतर पहुंचेंगे और लोकसभा में पेश किया जाएगा आम बजट 2026-27। बिल्कुल, तो हर वर्ग अपने अपने लिए उम्मीदें लगाकर बैठा है। प्रियदर्शी, अगर हम देखें तो जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है, पूंजीगत व्यय के जरिए निजी निवेश को लगातार गति मिल रही है अब देश के अंदर, और यही कहा जा रहा है कि राजकोषीय घाटे को संतुलित करने के लिए, डेट को कम से कम करने के लिए निजी निवेश को बढ़ाना जरूरी होगा। NHAI को लेकर अगर हम देखें तो उसने डेट को अपना आधे से भी कम पर लेकर चले आए हैं। बहुत सारे अच्छे संकेत इसके हमें दिखे हैं। ऐसे में क्या लग रहा है कि बजट के जरिए निजी क्षेत्र और ज्यादा क्या मोटिवेट हो सकता है, क्योंकि अभी वो उतना आक्रामक नहीं है जिसकी उम्मीद की जा रही है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग का जब बोल रहे हैं कि कोई भी देश चाहेगा कि उसका डेट लेवल इतना बढ़ ना जाए कि वो मैनेज नहीं कर पाए। अभी जो इंडिकेशन इकोनॉमिक सर्वे से मिला है कि डेट काफ़ी हद तक वेल मैनेज्ड है इंडिया में, बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग का जो अलग अलग मैकेनिज्म है, जैसे डेट मार्केट के ऊपर थ्रू बॉन्ड इशुएंस होता है या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम पूरी तरह से अलग नज़र से देखें कि वो हमारे एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी को बढ़ाता है। देखना है कि कितने हम उसके लिए तैयार है। अगर आप देखेंगे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्टॉक है अभी 94% ऑफ दैट एक्सटर्नल डेट को कवर करता है। 11 मंथ्स ऑफ हमारा इंपोर्ट कवर हो जाता है। तो डोमेस्टिक मार्केट, इंडियन मार्केट जो है कैपिटल मार्केट, उसमें कई सारे ऐसे इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट टाइम टू टाइम सोचा जा रहा है कि कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के जरिए और जो लोकल करेंसी डेट के जरिए वो जो कैपिटल फंडिंग का जो जरूरत है उसको मीट कर पाए। जी, और सबसे बड़ी बात, जी बोलिए। तो ये भी आंकड़ा मिला है कि जो इस बार जो डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन हुआ है, बोथ इक्विटी मार्केट एंड डेट मार्केट, और जो न्यू आईपीओ जो इशू हुआ है, सारे आंकड़े जो है कंट्री के फेवर में है। तो पूरी कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे जो हमारा फिस्कल मैनेजमेंट है, जो डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्रू कैपिटल मार्केट, डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट, ये एक अच्छा फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। जो हम हर साल बात करते हैं कि फिस्कल स्पेस है कि नहीं है, क्या हम और कुछ ऐसे एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उस तरह का कोई ऐसे खास डिफिकल्टी फिस्कल मैनेजमेंट साइड से नहीं है। लेकिन डोमेस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स, डोमेस्टिक मार्केट और फॉरेन मार्केट दोनों को कैसे ऐसा ऑप्टिमली यूटिलाइज किया जा सकता है फॉर वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, चाहे वो एनर्जी में हो, चाहे कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स हो, या जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, जहाँ पे हम एसीजेड का बात करें और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत होता है, वो सारे में ये सब होगा। और यही उम्मीद है इस बजट में भी कि वो कैपेक्स का जो मोमेंटम को वो स्पॉइल करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अभी तक जो हमको बचा के रखा है वो है डोमेस्टिक डिमांड। अब डोमेस्टिक डिमांड सही तरीके से कंट्री का इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट किया है डिस्पाइट ऑफ सो मच ऑफ टर्बुलेंस इन एक्सटर्नल मार्केट। तो एक कैपेक्स को मोमेंटम को खराब करना नहीं चाहेंगे, बट साथ ही साथ वो देखेंगे कि डोमेस्टिक सोर्सेज से जैसे ज़्यादा रिसोर्सेज मोबिलाइज हो पाए। अगर आप और एक आंकड़ा बता के मैं अपना इंटरवेंशन ख़त्म करूँगा कि 1000 के आसपास कुछ एक रूल्स रेगुलेशन है जिसको सेबी ने कंसोलिडेट किया है। जो मैं पहले बता रहा था कि जो सिंप्लीफिकेशन का जो दौर चल रहा है उसको कंसोलिडेट करके वो और ज़्यादा प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर रहे हैं।
कि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बढ़े, और रिटेल इन्वेस्टर को कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड और दूसरे टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें उनका ध्यान अट्रैक्ट करे। तो ये सारा जो एफर्ट है वो ऑनगोइंग है। सिद्धार्थ, एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, जब यहाँ पर फंडिंग की बात चल रही है, इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, फंडिंग की कमी को दूर करने के लिए या पूरा करने के लिए सरकार का पीपीपी मॉडल पर भी खासा जोर रहा है। क्या वो वर्क करता हुआ नजर आ रहा है या उसकी कुछ चुनौतियां हैं? उन चुनौतियों को जो है उस पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या कुछ इस बार बजट में कुछ विशेष या नए प्रावधान हो सकते हैं? यदि आप देखें तो रोड सेक्टर हो या कुछ अन्य क्षेत्र हों, वहां पर पीपीपी मॉडल बहुत ही सार्थक रहा है। और ये रेलवे में उतना इसमें पीपीपी पे काम उस गति पे नहीं हो पाई है जिसकी उम्मीद की जा रही थी, चाहे वो रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट हो या इस किस्म के प्रोजेक्ट्स हों। तो उम्मीद है कि रेलवे के क्षेत्र में काफ़ी इसमें काम बढ़ेगा। डिफेंस के क्षेत्र में आपने देखा कि निजी क्षेत्र के साथ सरकार ने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है और नई कंपनियां आई हैं जो कि ड्रोन और अन्य क्षेत्रों में काम कर रही हैं। और इस बार भी पीपीपी पे जोर रहेगा ताकि सर्विस डिलीवरी या में इम्प्रूवमेंट आए और सबको इसका फायदा मिले। और ये भी लग रहा है कि जिस तरीके से 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का गोल सेट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, डॉक्टर रंजीत, आत्मनिर्भरता उसके लिए बेहद आवश्यक है। और आत्मनिर्भरता की दृष्टि से देखें तो डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है, रिन्यूएबल एनर्जी दूसरा एक सेक्टर है जिस पर लगातार जो है काम हो रहा है। और तीसरा सेक्टर है रेलवे में जिस तरीके से वंदे भारत ट्रेन एक के बाद एक इंट्रोड्यूस हो रही हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से नए स्टेशन जो हैं अमृत भारत स्टेशन के नाम पर वो तैयार किए जा रहे हैं, तो इन क्षेत्रों पर लगातार जोर है। और आत्मनिर्भर भारत बनाकर किस तरीके से भारत को विकसित राष्ट्र एक रिकॉर्ड समय में बनाया जाए उस पर खासा जोर है, उसी को आगे बढ़ाया जाएगा इस बजट में। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। जैसे कि भारत ने 2070 तक नेट जीरो होने का मिशन लिया है, तो उसमें हमें 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी हमें देश में एम्प्लॉय करनी है, जिसके लिए कि हमने पहले अगर आप देखें तो भारत सस्टेनेबिलिटी के जो एक आवश्यकता है उस पर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। हम लोग बहुत कमिटेड हैं। हमारा जो पहले टारगेट था कि बाय 2030 हम लोग करीब 30% जो है कार्बन रिड्यूस करेंगे, लेकिन फिर से उसको बढ़ाया गया कि 45% कार्बन रिडक्शन इन द इकोनॉमी जो रहेगा बाय 2030। ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और जो हमारे नए एफटीएज हो रहे हैं, खास तौर पे जो हमने ईयू के साथ एफटीए किया है, इसमें सस्टेनेबिलिटी का, ग्रीन ट्रांजिशन का बहुत बड़ा महत्व रहेगा। क्योंकि हमें अपने ग्रीन टेक्नोलॉजीज को अपने प्रोडक्शन में, अपने फैक्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग में उसको इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में करीब 70 मिलियन से ज़्यादा एमएसएमईज हैं, तो कैसे उनको हैंड होल्ड किया जाए, क्योंकि जब आप ग्रीन ट्रांजिशन करेंगे तो आपको और अधिक फाइनेंस की ज़रूरत है। कैसे ग्रीन फाइनेंसिंग हो, और जो फाइनेंसिंग का मुद्दा रहा है एमएसएमईज के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा हमेशा रहा है, और उसके लिए कई सारे कदम सरकार ने उठाए हैं। बट और इस दिशा में कैसे हम एमएसएमईज को हैंड होल्ड करें, और जिससे कि जो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस उनके पास आए। और उस कॉम्पिटिटिवनेस के लिए हमें दो बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक सस्टेनेबिलिटी जैसे आपने कहा, और दूसरा रहेगा हमारा टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। कैसे, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड आप दुनिया में कोई भी ग्रोथ देख लें, बिना टेक्नोलॉजी के कोई भी ग्रोथ संभव नहीं है। आप अपने सिस्टम में एफिशिएंसी लाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको टेक्नोलॉजी का वो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और जो मुख्य जो समस्याएं एमएसएमईज की रही हैं हमेशा, तो डेफिनेटली फाइनेंस, एक्सेस टू इजी एंड चीपर फाइनेंस, अफोर्डेबल फाइनेंस। सेकंड रही है एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, एंड थर्ड रही है एक्सेस टू मार्केट। और जहां तक एक्सेस टू मार्केट में बहुत हद तक आप देखें
तो जेम पोर्टल है, ONDC है, अभी नए नए FTAs जो सरकार ने किए हैं, हमें इस FTAs के थ्रू करीब 30% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी में हमारा बिल्कुल इजी एक्सेस होगा, स्पेशली EU के FTA होने के बाद। और जो टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन है, इसमें डेफिनेटली काफ़ी फाइनेंस की ज़रूरत है, तो उस पे हमें एक इकोसिस्टम तैयार करना पड़ेगा। और हमने देखा है कि सरकार का जो बजट जितने भी अभी तक आए हैं, कभी हमने ये नहीं देखा कि ये जो बजट हैं पॉपुलिज्म पे बेस्ड हैं। हमेशा जो सरकार के बजट रहे हैं वो सिर्फ ग्रोथ ओरिएंटेड रहे हैं। स्पेशली जो इस टाइम सबसे ज़्यादा अच्छे बजट की ज़रूरत है, सिर्फ ग्रोथ ही नहीं बल्कि एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ की देश में जरूरत है, क्योंकि हमारे 65% युवा इस देश में हैं जो कि यंग हैं, और वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो हमारे पास जो टैलेंट है उसको कैसे, अभी स्किल की बात चल रही थी, तो कैसे भारत सिर्फ भारत के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए कैसे एक टैलेंट पूल यहाँ पे हम बना सकते हैं। तो इन सब पे जो लॉन्ग टर्म आई थिंक इस चीज को कैसे हम विकसित भारत के थ्रू अलाइन करके और इस पूरे जो एक सिस्टमेटिक चेंजेस होंगे, स्ट्रक्चरल जो चेंजेस होंगे, तो ये बजट जो है इन सब प्रोसेसेस पे डेफिनेटली फोकस करेगा। एट द सेम टाइम एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। डेफिनेटली उस पे भी आज अगर देखें तो कैसे हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को उसमें अपनाएं किसानों को, और कैसे उनको टेक्नोलॉजी दें जिससे कि हमारी ज़मीन या जो उनके पास खेती करने की ज़मीन है उसको बढ़ा नहीं सकते, बट हमें प्रोडक्शन हमें ज़्यादा चाहिए, तो डेफिनेटली हमें टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। ओवरऑल मैं समझता हूँ ये जो तीन चार चीज़ें हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, MSMEs हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस करने की जरूरत है। इंडिया के पास डेफिनेटली इतने सारे चैलेंजेस हैं, बट हमें कैसे उन चैलेंजेस के थ्रू नेविगेट करके फिस्कल प्रूडेंस बना के रखना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज सरकार के पास है, और जो मैं समझता हूँ इतने सालों तक सरकार ने इसको बहुत अच्छी तरह से एड्रेस किया है। बिल्कुल। और इसी को अगर हम समझे प्रियदर्शी, क्योंकि IMF, वर्ल्ड बैंक दोनों कह रहे हैं कि ग्लोबल ग्रोथ जो है वो तो स्लो हो रही है, लेकिन इंडिया, भारत अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना हुआ है। जब हम बाकी देशों से तुलना करते हैं और भारत की अर्थव्यवस्था को देखते समझते हैं, तो ऐसी क्या बड़ी बातें हैं जो भारत को अभी भी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाए हुए हैं, और बजट में कैसे इसकी झलक देखने को मिलती है कि किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं जिनका परिलक्षित होना इंडिया क्या फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में दिख रहा है कि अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहेगी। कि मैं थोड़ा सा उसका जो जिक्र कर रहे हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड प्रोवाइड करता हूं कि इंडिया जब शुरू में हम ग्लोबलाइजेशन का दौर था लेट 80s में और अर्ली 90s में, बहुत सारा स्पेकुलेशन था कि हम कैसे ग्लोबलाइजेशन को एम्ब्रेस करें। हमारा इन्फेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स है, तो धीरे धीरे कॉशियस ग्लोबलाइजेशन पाथ में हम लोग चल पड़े। और जब हम उसमें जो 2003 से 2007 ऑनवर्ड्स जो पूरी विश्व में जो हाई ग्रोथ फेज था, उसमें इंडिया ने अपना पोजीशन को कंसोलिडेट किया। और इंडिया का जो स्ट्रेंथ रहा है कि जो बुनियादी ढांचे के सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, एनेबलिंग कंडीशन को क्रिएट करना, और सबसे बड़ा जरूरी है जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहा है पिछले 2014 ऑनवर्ड्स, तो उसने पॉलिसी को प्रेडिक्टेबल बना के रखा हुआ है। तो इंडिया का आप इकोनॉमी का जो अप्रोच देखेंगे, हम कंजर्वेटिव नहीं है, बट वी हैव बीन कॉन्शियसली मैनेजिंग आवर इकोनॉमी, चाहे वो FDI फ्रंट में हो, कैपिटल अकाउंट ओपनिंग हो, तो ये सब जो है वो एक बढ़िया सा फाउंडेशन प्रोवाइड किया था। हम जब पूरी इमर्जिंग मार्केट स्पेस में जब दूसरे इकोनॉमीज में या तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, चाहे चाइना देख लीजिए 100% कैपिटल यूटिलाइजेशन हुआ है वहाँ पे, स्टील सेक्टर हो, जो भी हो, तो वहाँ से थोड़ा रीलोकेशन का एक ट्रेंड शुरू हुआ था MNC का। तब इंडिया ने होमवर्क कर रहे थे ये कि हम रेगुलेटरी रिफॉर्म करें,
जी टैक्स में रिफॉर्म करे, तो वो एक सिंक्रोनाइज्ड वे में जो प्रोसेस चल रहा था, तो उसका रिजल्ट हमको देखने मिला। और जो सेकेंड एस्पेक्ट्स ऑफ आपका जो दो क्वेश्चन था कि हम क्या कर रहे हैं, पिछले बजट अगर आप देखेंगे कई सारे ऐसे एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए स्पेसिफिक सेक्टर में, चाहे वो कॉटन हो जो भी हो, कई सारे कमोडिटीज का, तो एक फोकस्ड सेक्टर अप्रोच एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए रहा है। बट खाली एक्सपोर्ट बढ़ाने से भी नहीं होगा, हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए भी क्वालिटी रॉ मटेरियल का जरूरत है, क्वालिटी इक्विपमेंट और कैपिटल गुड्स का भी जरूरत है। तो कहाँ कहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं वो सारे जो पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स है, जो कैपिटल गुड्स है, तो सारे जो एफटीआई हो रहा है, एफटीए हो रहा है, इंडिया यूए एफटीए को अगर आप एफटीए को अगर आप देखेंगे, उसमें इंपोर्ट को भी ध्यान में रखा गया है, जो टैरिफ कंसेशन। तो जो ट्रेड सेक्टर है, ट्रेड सेक्टर में ये फोकस नहीं रहा है कि हम तो डोमेस्टिक डिमांड इकोनॉमी हमारा बहुत बड़ा है और उससे हम हाई ग्रोथ अचीव कर पा रहे हैं, तो हम एक्सटर्नल सेक्टर को नेग्लेक्ट कर दें, ऐसा नहीं रहा है। एक्सटर्नल सेक्टर में हमेशा ये फोकस रहा है कि हम ट्रेड को कैसे बढ़ाएं, बोथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को, इंपोर्ट का जो सोर्सिंग है वो कई सारे कंट्री में फोकस नहीं करके उसको डाइवर्सिफाई करें, क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट भी चाइना का साथ बढ़ रहा है, तो वो एक कंसर्न है। तो वही सारा जो डायरेक्शन है आप इस बजट में भी देखेंगे जी। और सबसे बड़ी बात ये है सिद्धार्थ, जो यहाँ पर प्रियदर्शी कह रहे हैं, पिछले आम बजट और इस आम बजट के बीच अगर एक बहुत बड़ा बदलाव है वो है यूरोपीय संघ के साथ एफटीए होना, ब्रिटेन के साथ एफटीए होना, यूएई के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण करार होना, और एक बड़ा बाजार भारत के लिए खुल गया है। इसलिए निर्माण और निर्यात पर जोर रहेगा इस बार के बजट में। क्या कुछ नए प्रावधान? जी बिल्कुल, ये जो है एक अहम फोकस का क्षेत्र रहेगा। जैसा कि वित्त मंत्री ने अपने बजट से पहले भी इंडिकेशन दिया है, कस्टम्स रिफॉर्म्स एक बड़ा क्षेत्र रहेगा जिसमें कि सरलीकरण की जाएगी, स्लैब्स कम किए जाएंगे। उन्होंने पिछले साल भी कुछ स्लैब्स कम किए थे, इस वर्ष वह और स्लैब्स कम किए जाएंगे, साथ ही प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई किया जाएगा। और जैसा इकोनॉमिक सर्वे में भी बताया गया है कि जो क्षेत्र हैं जैसे कि स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कुछ टेक्सटाइल्स में यूज होने वाले फाइबर्स हो गए, इनमें दरों को ऐसा रखा जाए ताकि वह डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज को उसका फायदा हो और ग्लोबल वैल्यू चेन में भारतीय कंपनियां जुड़ सकें। इसके तरफ भी जो है उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री का ध्यान रहेगा अपने बजट में। और यह सब जो है एक जो एफटीएज हैं उसमें ये सारा फीड इन करेगा और भारत को एक हब बनाने की, मैन्युफैक्चरिंग हब, सर्विसेज हब बनाने के तरफ जो दिशा दी जा रही है उस पे और जोर दिया जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर मेहता, जो बात अभी कह रहे हैं सिद्धार्थ की ग्लोबल वैल्यू चेन को ऊपर ले जाना, ये अभी भी थोड़ा चैलेंज है या कहें इस पर अभी हमें और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। पीएलआई और आत्मनिर्भर भारत से मैन्युफैक्चरिंग बेस तो भारत में बना है, लेकिन अब नेक्स्ट चैलेंज स्केल और एक्सपोर्ट का है, तो क्या बजट में हो सकता है कि इस पर थोड़ा सा फोकस हो? लगता है डॉक्टर मेहता नहीं है इस समय हमारे साथ जुड़े हुए। तो प्रियदर्शी, थोड़ा सा आप जो कंपैरिजन को लेकर समझा रहे थे, अभी अगर हम थोड़ा सा चैलेंजेस पर देखें या हम ये कहें, क्योंकि जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं या जब हम बड़े कदमों की बात करते हैं तो ये एक बार या दो बार में होने वाली प्रक्रिया नहीं होती है, साल दर साल होना है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसे में क्या लग रहा है आपको अभी कौन सी ऐसी चुनौतियां, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर हम दुनिया के मुकाबले कंपेयर कर रहे हैं तो तमाम चुनौतियां वैश्विक स्तर पर बनी हुई हैं, ऐसे कौन से चैलेंजेस आपको नजर आ रहे हैं जिन पर तुरंत फोकस इस बार के बजट में हो सकता है? क्योंकि विजन कहीं ना कहीं 2047 का है, लेकिन साल दर साल उसकी तरफ कदम आगे बढ़ाने हैं। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज अभी सामने है कि जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी वो बहुत फास्ट मूविंग है, उसका रियल टाइम बेसिस में चेंज होता रहता है। तो कहीं फाइनेंशियल मार्केट जो है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर है, वो इंडियन मार्केट को रिस्की ना समझे, तो वो सबसे बड़ा जरूरी
डिसिप्लिनरी मेजर रहेगा बजट में। थोड़ा बहुत हिंट करेंगे क्योंकि बजट पूरी तरह से इस एस्पेक्ट्स को अपना इतना स्पेस नहीं देंगे इसमें, लेकिन ये जरूर वो देखेंगे कि जो हमारा अचीवमेंट रहा है फिस्कल मैनेजमेंट फ्रंट में वो फर्दर डेटोरिएट ना हो जाए, क्योंकि अभी जिस तरह का जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है उसमें कुछ बोल नहीं सकते। एक बार पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मैग्नीट्यूड जो आउटफ्लो बढ़ जाएगा और गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस का आप तो सुने होंगे अभी जो चल रहा है, जो रैपिडली इवॉल्विंग प्राइसेस, तो ये क्या होगा, सडनली चेंज कर देगा जो इंडिया का जो परसेप्शन है इन द ग्लोबल मार्केट। तो इन्वेस्टर सेंटिमेंट को कैसे बरकरार रखे वो एक रिस्क फैक्टर है। सेकंड है कि जो एक्सपोर्ट फ्रंट में थोड़ा बहुत इस साल हमारा उपलब्धियां रहा है, अच्छा रहा है एक्सपोर्ट ग्रोथ, वो इसीलिए नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी वाज मच बेटर देन एनी अदर इकोनॉमी। इसका ये रहा है कि काफ़ी सारा फ्रंट लोडिंग भी हुआ है कि यूएस ने टैरिफ अनाउंसमेंट कर दिया है, लेकिन वो अनाउंसमेंट को इम्प्लीमेंट करने में जो टाइम लैग था उसमें सप्लायर को फ्रंट लोड कर दिए हैं और प्राइसेस इमीडिएटली बढ़ा नहीं है, तो वो भी एक फैक्टर है साथ साथ। तो उसको कैसे हम एक्सपोर्ट को इतना कंप्लेसेंट नहीं होके एक ऑर्गेनिक वे में एक्सपोर्ट ग्रोथ को मेंटेन रखें, इसके लिए कॉम्पिटिटिव सेक्टर में ध्यान देना है, एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना है। जैसे हमारा ट्रेडिशनल सेक्टर रहा है एक्सपोर्ट में, जेम्स ज्वेलरी है, फार्मास्यूटिकल है, अब नया नया सेक्टर हमारा एक्सपोर्ट में आ रहा है, डिफेंस है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, बहुत जल्दी हम सेमीकंडक्टर फ्रंट में भी ये करेंगे। तो ये सारे सेक्टर में फोकस रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि चैलेंजेस फ्रंट में जो एक्सटर्नल सेक्टर का टर्बुलेंस उसको मैनेज करना सबसे बड़ी चैलेंज रहेगा। सेकंड है कि जो मोमेंटम इन एक्सपोर्ट फ्रंट में है और जो इन्वेस्टमेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट है जो ग्लोबल लेवल में कम हुआ है बिकॉज ऑफ दिस टर्बुलेंस, उसको कैसे हम प्रॉपर तरीके से हैंडल करें। बाकी फोकस रिफॉर्म एजेंडा में कलीग सारे बता रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में तो फोकस रहेगा ही रहेगा, तो डोमेस्टिक सेक्टर का स्ट्रेंथ को मेंटेन रखेंगे, पर जो बाहर एक्सटर्नल सेक्टर का चैलेंज है वो मेनली जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को कैसे हैंडल करें, वो सबसे बड़ा जरूरी है। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि हमने निर्माण और निर्यात को लेकर काफ़ी चर्चा कर ली है इस सेशन में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता जा रहा है भारत का पर्यटन क्षेत्र। नए नए डेस्टिनेशन जो हैं उनकी मांग बढ़ रही है, भीड़ जा रही है, वहाँ पर पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है और उसके पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। एक जानकारी है आप लोगों के लिए, आप संसद टीवी पर तो लगातार जो है बजट से जुड़ी हुई हर एक घटना और ख़बर देखेंगे, और जब निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री 9वीं बार रिकॉर्ड 9वीं बार जो है आम बजट पेश करेंगी कुछ ही देर पश्चात, वो आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख पाएंगे, और न केवल हिंदी में बल्कि भारत की अलग अलग भाषाओं में। बिल्कुल, हिंदी और अंग्रेजी पर तो आप देख ही पाएंगे इसे, लेकिन अलग अलग भाषा में जो अनुवाद है वो लगातार साथ साथ होगा। तो अलग अलग भारतीय भाषाएं हैं जिनमें आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर लाइव हमारे साथ बने रहिए। महज 4 मिनट का वक्त और है जब सीधी कार्यवाही, सीधे प्रसारण के लिए हम आपको लेकर चलेंगे। इससे पहले अगर थोड़ा सा सिद्धार्थ समझें, जिस तरह से पर्यटन की बात अभी जिसका जिक्र किया प्रतिबिंब ने, उसी के जरिए हम अलग अलग राज्यों के रोल को समझें, क्योंकि पर्यटन कि जब हम बात कर रहे हैं तो भारत का हर राज्य इसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सम्मिलित होता है। और जब हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं या फिर हम सहकारी संघवाद की बात करें तो असली परीक्षा संसाधनों के वितरण में होती है, और साथ ही उसका उपयोग कैसे हो रहा है, उसका एक तरह से मैं कहूं कि उस पर नजर कैसे रखी जा रही है, उसे मजबूत कैसे रख कर किया जा रहा है, इस पर भी नजर होती है। तो आपको लग रहा है कि केंद्र और राज्य के जो वित्तीय संबंध है वो पहले से ज्यादा परिपक्व हुए हैं? जी, जो एक उसका जीता जागता उदाहरण जीएसटी काउंसिल है, जिसमें कि केंद्र और राज्य के मंत्री मिलकर अपने जो पावर्स थे उनको जोड़कर साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे कि उपभोक्ताओं को बहुत फायदा मिला है और मैन्युफैक्चरर्स को फायदा मिला है, क्योंकि जो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस था वो कम हुआ है। इस बार के बजट के साथ जो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है वह भी पेश होगी, जो 16वां वित्तीय आयोग है,
और उसमें किस तरीके से अगले 5 वर्षों में राज्य को डेवोल्यूशन दिया जाएगा, केंद्र करों में कितना उनका शेयर रहेगा वो भी बताया जाएगा, और राज्यों के हिसाब से उनको कितना शेयर मिलेगा वो भी बताया जाएगा। उस पे भी लगातार नजर बनी रहेगी। और जो एक तरीके से देखा जाए तो ज्यादा एक कोऑर्डिनेशन रहा है राज्यों में भी और केंद्र में भी, चाहे वह सैस की जैसे स्कीम हो जिसमें कि केंद्र से 50 वर्षों तक के लिए ऋण दिया जा रहा है इंटरेस्ट फ्री, जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में राज्य इस्तेमाल कर रहे हैं। अन्य स्कीमों के द्वारा भी केंद्र का लगातार समर्थन बना रहा है स्टेट्स को। तो ये सारी स्कीम्स जो है एक फिस्कल फेडरलिज्म की तरफ पॉइंट कर रही हैं। बिल्कुल। तो अब बहुत ही कम समय है, अब हम सीधा हमें रुख करना पड़ेगा। संसद की कार्यवाही बस कुछ ही पलों में शुरू हो रही है। आप संसद टीवी पर बने रहिए, सीधा प्रसारण होगा जिसमें रिकॉर्ड भी बन रहा है, तो इसके गवाह बनिए और संसद टीवी पर लगातार लाइव अपडेट आप देखते रहिए। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, आइटम नंबर 1, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। Item number 1. Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English versions, under Article 281 of the Constitution, Report for 2026 to 2031, Volume 1, Main Report of the 16th Finance Commission. 2. Report for 2026-2031, Volume 2, Annexures of the 16th Finance Commission. Number 3, explanatory memorandum as to the action taken on the recommendations contained in the above report. Item number 2, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी। Honorable Speaker, sir, on the sacred occasion of Magh Purnima and the birth anniversary of Guru Ravidas, I present the budget for the year 2026-2027. Since we assumed office 12 years ago, India's economic trajectory has been marked by stability, fiscal discipline, sustained growth, and moderate inflation. This is the result of conscious choices we have made, even in times heightened uncertainty and disruption. Our government, led by Honorable Prime Minister Modi,
has decisively and consistently chosen action over ambivalence, reform over rhetoric, and people over populism. We have pursued far-reaching structural reforms, fiscal prudence and monetary stability, whilst maintaining a strong thrust on public investment. Keeping Atmanirbharta as a lodestar, we have built domestic manufacturing capacity, energy security, and reduced critical import dependencies. Simultaneously, we have ensured that citizens benefit from every action of the government, undertaking reforms to support employment generation, agricultural productivity, household purchasing power, and universal services to people. These measures have delivered a high growth rate of around 7% and helped us make substantial strides in poverty reduction and improvement in the lives of our people. Today, we face an external environment in which trade and multilateralism are imperiled and access to resources and supply chains are disrupted. New technologies are transforming production systems while sharply increasing demands on water, energy, and critical minerals. India will continue to take confident steps towards Vikasit Bharat, balancing ambition with inclusion. As a growing economy with expanding trade and capital needs, India must also remain deeply integrated with global markets, exporting more and attracting stable long-term investment. As I begin part A, I want to express my gratitude to the people for standing firmly with us as we forge our way together towards becoming one of the largest economies of the world. Our aim is to transform aspiration into achievement and potential into performance as we ensure that the dividends of growth reach every farmer, the scheduled caste, the scheduled tribes, the nomads, the youth, the poor, and the women. In Vikasit Bharat Young Leaders Dialogue 2026, several innovative ideas were shared with our Prime Minister, which have inspired many of the proposals, making this a unique Yuva Shakti-driven budget. Our government's sankalp is to focus on our poor, underprivileged, and the disadvantaged. To deliver on this sankalp, and given that this is the first budget prepared in Kartavya Bhavan, we are inspired by three Kartavya. Our first Kartavya is to accelerate and sustain economic growth by enhancing productivity and competitiveness and building resilience to volatile global dynamics. Our second Kartavya is to fulfill aspirations of our people and build their capacity, making them strong partners in India's path to prosperity. Our third Kartavya, aligned with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, is to ensure that every family, community, region, and sector has access to resources, amenities, and opportunities for meaningful participation. This threefold approach requires a supportive ecosystem. The first requirement is to sustain the momentum of structural reforms, continuous, adaptive, and forward-looking. Second, a robust and resilient financial sector is central to mobilizing savings, allocating capital efficiently, and managing risks. Third, cutting-edge technologies, including AI applications, can serve us as force multipliers for better governance. Reform Express. Our government has undertaken comprehensive reforms towards creating employment,
boosting productivity and accelerating growth. After the Prime Minister's announcement on Independence Day in 2025, over 350 reforms have been rolled out. This includes GST simplification, notification of labor codes, and rationalization of mandatory quality control orders. High-level committees have been formed, and in parallel, the central government is working with the state governments on deregulation and reducing compliance requirements. The Reform Express is well on its way and will maintain its momentum to help us fulfill our kartavya. I now move to specific proposals. Under our first kartavya, to accelerate and sustain economic growth, I propose interventions in 6 areas. 1. Scaling up manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. 2. Rejuvenating legacy industrial sectors. 3. Creating champion MSMEs. 4. Delivering a powerful push for infrastructure. 5. Ensuring long-term security and stability. And 6. Developing city economic regions. Scaling up of manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. Biopharma Shakti, meaning biopharma strategy for health advancement through knowledge, technology, and innovation. India's disease burden is observed to be shifting towards non-communicable diseases like diabetes, cancer, and autoimmune disorders. Biologic medicines are key to longevity and quality of life at affordable costs. To develop India as a global biopharma manufacturing hub, I propose the Biopharma Shakti with an outlay of 10,000 crores over the next 5 years. This will build the ecosystem for domestic production of biologics and biosimilars. The strategy will include a biopharma-focused network with 3 new national institutes of pharmaceutical education and research, popularly known as NIPERs, and upgrading 7 existing ones. It will also create a network of 1,000 accredited India clinical trials sites. We propose to strengthen the Central Drug Standard Control Organization to meet global standards and approve timeframes through and approval timeframes through a dedicated scientific review cadre and specialists. India's semiconductor mission 1.0 expanded India's semiconductor sector capabilities. Building on this, we will launch ISM 2.0 to produce equipment and materials, design full-stack Indian IP, and fortify supply chains. We will also focus on industry-led research and training centers to develop technology and skilled workforce. The Electronics Components Manufacturing Scheme, launched in April 2025, with an outlay of 22,919 crores, already has investment commitments at double the targets. We propose to increase the outlay to 40,000 crores to capitalize on this momentum. A scheme for rare earth permanent magnets was launched in 2025 November. We now propose to support the mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu to establish dedicated rare earth corridors to promote mining, processing, research, and manufacturing. To enhance domestic chemical production and reduce import dependency, we will launch a scheme to support states in establishing 3 dedicated chemical parks through challenge route
on a cluster-based plug-and-play model. Strong capital goods. Strong capital goods capability is a determinant of productivity and quality across different sectors. Towards building this capacity, I propose the following. High-tech tool rooms will be established by central public sector enterprises at 2 locations as digitally enabled automated service bureaus that locally design, test, and manufacture high-precision components at scale and at lower cost. 2. A scheme for enhancement of construction and infrastructure equipments will be introduced to strengthen domestic manufacturing of high value and technologically advanced CIE. This can range from lifts in a multi-storied apartment or firefighting equipment in multiplexes, large or small, and to tunnel boring equipments for building metros and high-altitude roads. I also propose a scheme for container manufacturing to create a globally competitive container manufacturing ecosystem with a budgetary allocation of 10,000 crores over a 5-year period. For the labor-intensive textile sector, I propose an integrated program with 5 subparts. 1. The National Fiber Scheme for Self-Reliance in Natural Fibers, such as silk, wool, and jute, man-made fibers, and new age fibers. Textile expansion and employment scheme to modernize traditional clusters with capital support for machinery, technology upgradation, and common testing and certification centers. 3. The National Handloom and Handicraft Program to integrate and strengthen existing schemes and ensure targeted support for weavers and artisans. Tex Eco Initiative to promote globally competitive and sustainable textiles and apparels. Samarth 2.0 to modernize the upgrade the textile skilling ecosystem through collaboration with industry and academic institutions. Further, I propose to set up a mega textile parks in challenge mode. They can also focus on bringing value addition to technical textiles. I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom, and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process, and production. This will benefit our weavers, village industries, One District, One Product ODOP initiative, and also our rural youth. India has the potential to emerge as a global hub for high-quality, affordable sports goods. I propose a dedicated initiative for sports goods that will promote manufacturing, research, and innovation in equipment design, as well as material sciences. Rejuvenation of legacy industrial clusters. I propose to introduce a scheme to revive 200 legacy industrial clusters to improve their cost competitiveness and efficiency through infrastructure and technology upgradation. Creating champion SMEs and supporting micro enterprises. Recognizing MSMEs as a vital engine of growth, I propose a 3-pronged approach to help them grow as champions. Equity support. I propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to create future champions
incentivizing enterprises based on select criteria. I also propose to top up the Self-Reliant India Fund set up in 2021 with 2,000 crores to continue support to micro enterprises and maintain their access to risk capital. Liquidity support. With TREDS, more than 7 lakh crore has been made available to MSMEs. To leverage its full potential, I propose 4 measures. 1. Mandate TREDS as the transaction settlement platform for all purchases from MSMEs by CPSEs, serving as a benchmark for other corporates. 2. Introduce a credit guarantee support mechanism through CGT-MSE for invoice discounting on TREDS platform. 3. Link GEM with TREDS for sharing information with financiers about government purchases from MSMEs, encouraging cheaper and quicker financing. 4. Introduce TREDS receivables as asset-backed securities, helping develop a secondary market, enhancing liquidity and settlement of transactions. Professional support. Government will facilitate professional institutions such as the ICAI, ICSI, ICMAI to design short-term modular courses and practical tools to develop a cadre of corporate mitras, especially in Tier 2 and Tier 3 towns. These accredited para-professionals will help MSMEs meet compliance requirements at affordable costs. Infrastructure. During this past decade, our government has undertaken several initiatives for large-scale enhancement of public infrastructure, including through new financing instruments such as Infrastructure Investment Trust (InvITs) and Real Estate Investment Trust (REITs), and institutions like NIIF and NABFID. We shall continue to focus on developing infrastructure in cities with over 5 lakh population, that is Tier 2, Tier 3 cities, which have expanded to become growth centers. Public capital expenditure has increased manifold from 2 lakh crore in 2014-15 to an allocation of 11.2 lakh crore in BE 25-26. In this coming year, that is financial year 2026-27, I propose to increase it to 12.2 lakh crores to continue the momentum. To strengthen the confidence of private developers regarding risks during infrastructure development and construction phase, I propose to set up an infrastructure risk guarantee fund to provide prudentially calibrated partial credit guarantee to lenders. Over the years, REITs have emerged as a successful instrument for asset monetization. I propose to accelerate recycling of significant real estate assets of the CPSEs through the setting up of dedicated REITs. To promote environmentally sustainable movement of cargo, I propose to 1. Establish new dedicated freight corridors connecting Dankuni in the east to Surat in the west. Operationalize 20 new national waterways over the next 5 years, starting with National Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich areas of Talcher and Angul and industrial centers like Kalinga Nagar to the ports of Paradeep and Dhamra. Training institutes will be set up as regional centers of excellence for development of required manpower for these waterways. This will benefit youth in the entire stretch of the waterways to train and acquire
skills. Further, a ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna. And C, launch a coastal cargo promotion scheme for incentivizing a modal shift from rail to road to increase the share of inland waterways and coastal shipping from 6% to 12% by 2047. To enhance last mile and remote connectivity and promote tourism, I propose to give incentives to indigenize manufacturing of seaplanes. A seaplane VGF scheme will be also introduced to provide support for operations. Carbon capture, utilization and storage. Aligning with the roadmap launched in December 2025, the carbon capture, utilization and storage technologies at scale will achieve higher readiness and an end-use application across 5 industrial sectors, including power, steel, cement, refineries, and chemicals. An outlay of 20,000 crore is proposed over the next 5 years for this purpose. City economic regions. Cities are India's engines of growth, innovation, and opportunities. We shall now focus on Tier 2, Tier 3 cities, and even temple towns, which need modern infrastructure and basic amenities. This budget aims to further amplify the potential of cities to deliver the economic power of agglomerations by mapping city economic regions based on their specific growth drivers. An allocation of 5,000 crore per CER over 5 years is proposed for implementing their plans through a challenge mode with a reform cum result-based financing mechanism. In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. Financial sector. The Indian banking sector today is characterized by strong balance sheet, historic highs in profitability, improved asset quality, and coverage exceeding 98% of villages in the country. At this juncture, we are well placed to futuristically evaluate the measures needed to continue on the path of reform-led growth of this sector. I propose setting up a high-level committee on banking for Vikasit Bharat. High-level committee on banking for Vikasit Bharat to comprehensively review the sector and align it with India's next phase of growth, while safeguarding financial stability, inclusion, and consumer protection. The vision for NBFCs for Vikasit Bharat has been outlined with clear targets for credit disbursement and technology adoption in order to achieve scale and improve efficiency in the public sector NBFCs. As a first step, it is proposed to restructure the Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation. I propose a comprehensive review of the foreign exchange management non-debt instruments rules to create a more contemporary, user-friendly framework for foreign investments consistent with India's evolving economic priorities. Corporate bond market. I propose to introduce a market-making framework with suitable access to funds and derivatives
on corporate bond indices. I also propose to introduce total return swaps on corporate bonds. Municipal bonds. To encourage the issuance of municipal bonds of higher value by larger cities, I propose an incentive of 100 crore rupees for a single bond issuance. 100 crore rupees for a single bond issuance of more than 1,000 crore. The current scheme under Amrit which incentivizes issuances up to 200 crores only, will also continue to support smaller and medium towns. That will also continue to support the smaller and medium towns. Ease of doing business. Individual persons resident outside India, PROI, will be permitted to invest in equity instruments of listed Indian companies through the Portfolio Investment Scheme. It is also proposed to increase the investment limit for an individual PROI under the scheme from 5% to 10%, with an overall investment limit for all individual PROIs to 24% from the current 10%. Emerging technologies including AI. 21st century is technology driven. Adoption of technology is for the benefit of all people. Farmers in the field, women in STEM, youth keen to upskill, and Divyangjan to access newer opportunities. The government has taken several steps to support new technologies through AI Mission, National Quantum Mission, Anusandhan National Research Fund, and Research and Development and Innovation Fund. Our second kartavya is to fulfill aspirations and build capacities. Close to 25 crore individuals have come out of multi-dimensional poverty through a decade of our government's sustained and reform-oriented efforts. Our government has therefore decided to place a renewed emphasis on the service sector to provide a pathway to fulfilling aspirations of a youthful India with the following measures. I propose to set up a high-powered education to employment and enterprises standing committee to recommend measures that focus on services sector as a core driver of Vikasit Bharat. This will make us a global leader in services with a 10% global share by 2047. The committee will prioritize areas to optimize the potential for growth, employment, and exports. They will also assess the impact of emerging technologies, including AI, on jobs and skill requirements and propose measures thereof. To create a range of skilled career pathways, a new range of skilled career pathways for our youth, I propose interventions in the following sectors. Health. Existing institutions for allied health professionals will be upgraded and new AHP institutions established in private and government sectors. This will cover 10 selected disciplines, including optometry, radiology, anesthesia, OT technology, applied psychology, and behavioral health, and add 1 lakh AHPs over the next 5 years. A strong care system covering geriatric and allied care services will be built. A variety of NSQF-aligned programs will be developed to train multi-skilled caregivers, combining core care and allied skills
such as wellness, yoga, and operation of medical assistive devices. In the coming year, 1.5 lakh caregivers will be trained. Hubs for medical value tourism. To promote India as a hub for medical tourism services, I propose to launch a scheme to support states in establishing 5 regional medical hubs in partnership with the private sector. These hubs will serve as integrated healthcare complexes that combine medical, educational, and research facilities. They will have Ayush centers, medical value tourism facilitation centers, and infrastructure for diagnostics, post-care, and rehabilitation. These hubs will provide diverse opportunities, job opportunities for health professionals, including doctors and AHPs. Ancient Indian yoga, already respected in several parts of the world, was given a mass global recognition when Honorable Prime Minister took it to the UN. Post-COVID, Ayurveda gained a similar global acceptance and recognition. Exporting quality Ayurveda products helps farmers who grow the herbs and youth who process the products. To meet growing global demand, a few more steps are being taken. I propose to, 1, set up 3 new All India Institutes of Ayurveda. 2, upgrade Ayush pharmacies and drug testing labs for higher standards of certification ecosystem and make available more skilled personnel. 3, upgrade the WHO Global Traditional Medicine Center in Jamnagar to bolster evidence-based research, training, and awareness for traditional medicine. Animal husbandry. Livestock contributes to close to 16% of farm income, including of poor and marginal households. To scale up availability of veterinary professionals by more than 20,000, I propose to roll out a loan-linked capital subsidy support scheme for establishment of veterinary and para-veterinary colleges, veterinary hospitals, diagnostic laboratories, and breeding facilities in private sector. Collaboration between Indian and foreign institutions will also be facilitated. Orange economy. India's animation, visual effects, gaming and comics sector, AVGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up AVGC content creator labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. The Indian design industry is expanding rapidly, and yet there is a shortage of Indian designers. I propose to establish, through Challenge Route, a new National Institute of Design to boost design education and development in the eastern region of India. Education. Our government will support states through Challenge Route in creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistics corridors. These planned academic zones will host multiple universities, colleges, and research institutions, skill centers, and residential complexes. In higher education, STEM institutions, prolonged hours of study and laboratory work pose some challenges for girl students. Through VGF, viability gap funding, and capital support, 1 girls' hostel
will be established in every district to promote astrophysics and astronomy via immersive experiences. 4 telescope infrastructure facilities will be set up or upgraded. The National Large Solar Telescope, the National Large Optical Infrared Telescope, the Himalayan Chandra Telescope, and the Cosmos 2 Planetarium. Tourism. The tourism sector has the potential to play a large role in the employment generation, forex earnings, and expanding the local economy. I propose to set up a National Institute of Hospitality by upgrading the existing National Council for Hotel Management and Catering Technology. It will function as a bridge between academia, industry, and government. I also propose a pilot scheme for upskilling 10,000 guides in 20 iconic tourist sites through a standardized, high-quality, 12-week training course in hybrid mode in collaboration with the Indian Institute of Management. A national destination digital knowledge grid will be established to digitally document all places of significance, cultural, spiritual, and heritage. This initiative will create a new ecosystem of jobs for local researchers, historians, content creators, and technology partners. India has the potential and opportunity to offer world-class trekking and hiking experience. We will develop ecologically sustainable mountain trails in Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Jammu Kashmir. Also in Araku Valley in the Eastern Ghats and Podigai Malai in the Western Ghats. Turtle trails along key nesting sites in the coastal areas of Odisha, Karnataka, and Kerala. And 3 bird watching trails along the Pulikat Lake in Andhra Pradesh, Tamil Nadu. It's on the border. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, we established the International Big Cat Alliance in 2024. This year, India is hosting the first ever Global Big Cat Summit, where heads of governments and ministers from 95 range countries will deliberate on collective strategies for conservation. Heritage and culture tourism. I propose to develop 15 archaeological sites, including Lothal, Dolavira, Rakhi Gadi, Adichanallur, Saranath, Hastinapur, and Leh Palace into vibrant experiential cultural destinations. Excavated landscapes will be open to the public through curated walkways. Immersive storytelling skills and technologies will be introduced to help conservation labs, interpretation centers, and guides. The sports sector provides multiple means of employment, skilling, and job opportunities. Taking forward the systematic nurturing of sports talent, which is set in motion through the Khelo India program earlier, I propose to launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. The mission will facilitate an integrated talent development pathway supported by training centers, which are foundational, intermediate, and elite levels. B, systematic development of coaches and support staff. C, integration of sports science and technology. D,
competitions and leagues to promote sports culture and provide platforms. And E, development of sports infrastructure for training and competition. Our third Kartavya aligns with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas towards Vikasit Bharat. This requires targeted efforts for 1. Increasing farmer incomes through productivity enhancement and entrepreneurship, with special attention to small and marginal farmers. B. Empowering Divyangjan through access to livelihood opportunities, training, and high-quality assistive devices. C. Empowering the vulnerable to access mental health and trauma care. D. Focus on the Purvodaya states and the Northeast region to accelerate development and employment opportunities. Fisheries. We will undertake initiatives for integrated development of 500 reservoirs and Amrit Sarovars. 2. Strengthen the fisheries value chain in coastal areas and enable market linkages involving startups and women-led groups together with fish farmer producer organizations. Animal husbandry. To provide quality employment opportunities in rural and peri-urban areas, we will support the animal husbandry sector in entrepreneurship development through A. A credit-linked subsidy program, B. Scaling up and modernization of livestock enterprises, C. Enhanced creation of livestock, dairy, and poultry enhanced creation of livestock, dairy, and poultry-focused integrated value chains, and D, encourage creation of livestock farmer-producer organizations. High-value agriculture. To diversify farm outputs, increase productivity, enhance farmers' incomes, and create new employment opportunities, we will support high-value crops such as coconut, sandalwood, cocoa, cashew in the coastal areas, agar trees in northeast, and nuts such as almonds, walnuts, and pine nuts in our hilly regions. These, all of them, will be supported. India is the world's largest producer of coconuts. About 30 million people, including nearly 10 million farmers, depend on coconuts for their livelihood. To further enhance competitiveness in coconut production, I propose a coconut promotion scheme to increase production and enhance productivity through various interventions, including replacing and non-productive trees with new saplings or plants or varieties in major coconut growing states. A dedicated program is proposed for Indian cashew and cocoa to make India self-reliant in raw cashew and coconut production and processing, enhance export competitiveness, and transform Indian cashew and Indian cocoa into premium global brands by 2030. Sandalwood. Sandalwood is closely linked to India's social and cultural heritage. Our government will partner with state governments to promote focused cultivation and post-harvest processing to restore the glory of the Indian sandalwood ecosystem, to rejuvenate old, low-yielding orchards, and expand high-density cultivation of walnuts, almonds, and pine nuts. We will support a dedicated program to enhance farmer incomes and in bringing value addition by engaging youth. Bharat Vistar, that is virtually integrated system to access agricultural resources. I propose to launch Bharat Vistar, a multilingual AI tool that shall integrate the AgriStack portals and the ICAR package on agricultural practices with AI systems. This will enhance farm productivity, enable better decisions for farmers, and reduce risk by providing
providing customized advisory support. She Marts for rural women-led enterprises. Building on the success of Lakpati Didi program, I propose to help women take the next step from credit-linked livelihoods to being owners of enterprises. Self-help entrepreneur, She Marts will be set up as community-owned retail outlets within the cluster-level federations through enhanced and innovative financing instruments. Empowering Divyangjan. Divyangjan Kaushal Yojana. Information technology, AVGC sectors, hospitality and food and beverages sectors often offer task-oriented and process-driven roles which are suitable for Divyangjan. We will ensure dignified livelihood opportunities through industry-relevant and customized training specific to each Divyangjan group. Divyang Sahara Yojana. Timely access to high-quality assistive devices for all eligible Divyangjan is a fundamental need. I propose to 1. Support the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, ALIMCO, to set up and to scale up production of assistive devices, invest in R&D and AI integration, strengthen PM Divyasha Kendras, and support setting up of assistive technology marts as modern retail style centers where Divyangjan and senior citizens can see, try and purchase assistive products. Reaffirming our commitment to mental health and trauma care. There are no national institutes for mental health care in North India. We will therefore set up a NIMHANS 2 and also upgrade national mental health institutes in Ranchi and in Tezpur as regional apex institutions. Emergencies expose families, particularly the poor and vulnerable, to unexpected expenditure. We will strengthen and increase these capacities by 50% in district hospitals by establishing emergency and trauma care centers. Focus on Purvodaya states and northeastern regions. Purvodaya. I propose the development of an integrated East Coast industrial corridor with a well-connected node at Durgapur, creation of 5 tourism destinations in 5 Purvodaya states, and the provision of 4,000 e-buses. Buddhist sites in northeastern region. The northeastern region is a civilizational confluence of Theravada and Mahayana or Vajrayana traditions. I propose to launch a scheme for development of Buddhist circuits in Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram, and Tripura. The scheme will cover preservation of temples and monasteries, pilgrimage interpretation centers, connectivity, and pilgrim amenities. 16th Finance Commission. On 17th November 2025, the 16th Finance Commission submitted its report to the President. As mandated under Article 281 of the Constitution, the government is to lay the report along with the explanatory memorandum on the action taken report on the recommendations of the Commission in Parliament, which, Sir, Honourable Speaker, you've allowed me to do at the commencement of this session. The government has accepted the recommendation of the Commission to retain the vertical share of devolution at 41%. As recommended by the Commission, I have provided 1.4 lakh crores of rupees to the states for the year 2026-2027 as Finance Commission grants. These include rural and
urban local body and disaster management grants. Fiscal consolidation. Government has been delivering on our fiscal commitments consistently without compromising on social needs. To strive towards accepted standards of fiscal management in Budget 25-26, I had indicated that the central government would target reaching a debt to GDP ratio of 50 plus or minus 1% by 2030-31. In line with this, the debt to GDP ratio is estimated to be 55.6% of GDP in BE 26-27, compared to 56.1% of GDP in RE 25-26. A declining debt to GDP ratio will gradually free up resources for priority sector lending and expenditure by reducing the outgo on interest payments. One of the main operational instruments for debt targeting is the fiscal deficit. I am happy to inform this august House that I fulfilled my commitment made in 2021-2022 to reduce fiscal deficit below 4.5% of GDP by 25-26. In RE 25-26, the fiscal deficit has been estimated at par with BE of 2025-26 at 4.4% of GDP. In line with the new fiscal prudence path of debt consolidation, the fiscal deficit in BE 26-27 is estimated to be 4.3% of the GDP. The revised estimates of the non-debt receipts are 34 lakh crore rupees, of which the centre's net tax receipts are 26.7 lakh crore. The revised estimate of the total expenditure is 49.6 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 11 lakh crores. Budget estimates 2026 to 2027. Coming to 26-27, the non-debt receipts and the total expenditure are estimated as 36.5 lakh crore and 53.5 lakh crore respectively. The centre's net tax receipts are estimated at 28.7 lakh crore rupees. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.7 lakh crore rupees. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 17.2 lakh crore rupees. I'll now move to Part B. Part B, direct taxes. Honorable Speaker, sir, I now present my proposals on direct taxes. New Income Tax Act. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. Ease of living. I propose that any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal to a natural person will be exempt from income tax, and any TDS on this account will be done away with. I propose to reduce TCS rate on the sale of overseas tour program package from the current 5% and 20% to 2% without any stipulation of amount.
I propose to reduce TCS rate for pursuing education and for medical purposes under the Liberalized Remittance Scheme, popularly known as LRS, from 5% to 2%. Supply of manpower services is proposed to be specifically brought within the ambit of payment to contractors for the purpose of TDS to avoid ambiguity. Thus, TDS on these services will be at the rate of either 1% or 2% only. I propose a scheme for small taxpayers, wherein a rule-based automated process will enable obtaining a lower or nil deduction certificate instead of filing an application with the assessing officer. For the ease of taxpayer holding securities in multiple companies, I propose to enable depositories to accept Form 15G or Form 15H from the investor and provide it directly to various relevant companies. I propose to extend time available for revising returns from 31st December to up to 31st March with the payment of a nominal fee. I also propose to stagger the timeline for filing of tax returns. Individuals with ITR 1 and ITR 2 returns will continue to file till 31st July, and non-audit business cases or trusts are proposed to be allowed time till 31st August. TDS on sale of immovable property by a non-resident is proposed to be deducted and deposited through resident buyers and his or her PAN-based challan instead of requiring a TAN, which is a temporary accounting number. To address practical issues of small taxpayers like students, young professionals, tech employees, relocated NRIs, and such others, I propose to introduce a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for these taxpayers to disclose income or assets below a certain size. This scheme would be applicable for two categories of taxpayers, namely, A, who did not disclose their overseas income or assets, and B, who disclosed their overseas income and or paid due tax but could not declare the asset acquired. For category A, the limit of undisclosed income or asset is proposed to be up to 1 crore rupees. They need to pay 30% of fair market value of asset or 30% of undisclosed income as tax and 30% as additional income tax in lieu of penalty, and would thereby get immunity from prosecution. For category B, asset value is proposed to be up to 5 crore rupees. Here, immunity from both penalty and prosecution will be available with a payment of fee of 1 lakh rupees. Rationalizing penalty and prosecution. Multiplicity of proceedings are hindrance to the ease of doing business. I propose to integrate assessment and penalty proceedings by way of a common order for both. There will be no interest liability on the taxpayer on the penalty amount for the period of appeal before the first appellate authority, irrespective of the outcome of appeal process. Further, quantum of prepayment is being reduced from 20% to 10% and will continue to be calculated only on core tax demand. As an additional measure for reducing litigation, I propose to allow taxpayers to update their returns even after reassessment proceedings have been initiated, and an additional 10% tax rate over and above the rate applicable for the relevant year. The assessing officer will then use only this updated return in his proceedings. There is already a framework for immunity from penalty and prosecution in the cases of underreporting. I propose to apply this framework for immunity to misreporting too. However,
In such a case, the taxpayer will need to pay 100% of the tax amount as an additional income tax over and above the tax and interest due. Penalties for certain technical defaults, such as failure to get accounts audited, non-furnishing of transfer pricing audit report, and default in furnishing statement for financial transactions are proposed to be converted into fee. I propose to rationalize prosecution framework under Income Tax Act while maintaining a careful balance for deterrence in some serious offence. Non-production of books of account and documents and requirement of TDS payment where payment is made in kind are being decriminalized. Further, minor offences will attract fine only. The remaining prosecutions will be graded commensurate with the quantum of offence. They will entail only simple imprisonment with maximum imprisonment reduced to 2 years and power to courts to convert even those into fines. There is no penalty. There is no penalty presently for non-disclosure of non-immovable foreign assets with aggregate value less than 20 lakh rupees. I propose to also provide them with immunity from prosecution with retrospective effect from 1/10/2024. Cooperatives. Deduction is already allowed to a primary cooperative society engaged in supplying milk, oilseeds, fruits or vegetables raised or grown by its members. I propose to extend this deduction to also include supply of cattle feed and cotton seed produced by its members. I propose to allow inter-cooperative society dividend income as deduction under the new tax regime to the extent it is further distributed to its members. I further propose to allow exemption for a period of 3 years to dividend income received by a notified national cooperative federation on their investments made in companies up to 31/1/2026. This exemption would be allowed only for dividends further distributed to its member cooperatives. Supporting IT sector as India's growth engine. India is a global leader in software development services, IT-enabled services, knowledge process outsourcing services, and contract R&D services relating to software development. These businesses and their segments are quite interconnected with each other. All these services are proposed to be clubbed under a single category of information technology services with a common safe harbor margin of 15.5% applicable to all. The threshold for availing safe harbor for IT services is being enhanced substantially from 300 crore rupees to 2,000 crore rupees. Safe harbor for IT services shall be approved by an automated rule-driven process without any need for tax officer to examine and accept the application. Once applied by an IT services company, the same safe harbor can be continued for a period of 5 years at a stretch at its choice. For IT services companies who want to conclude advanced pricing agreement, APA, I propose to fast-track unilateral APA process for IT services and endeavor to conclude it within a period of 2 years. The period of 2 years can be extended by a further period of 6 months on taxpayers' request. I propose to extend the facility of modified returns available to the entity entering APA to its associated entities also. Attracting global business and investment. Recognizing the need to enable critical infrastructure and boost investment in data centers, I propose to provide tax holiday till 2047
to any foreign company that provides cloud services to customers globally by using data center services from India. It will, however, need to provide services to Indian customers through an Indian reseller entity. I also propose to provide a safe harbor of 15% on cost in case the company providing data center services from India is a related entity. To harness the efficiency of just-in-time logistics for electronic manufacturing, I propose to provide safe harbor to non-residents for component warehousing in a bonded warehouse at a profit margin of 2% of the invoice value. The resultant tax of about 0.7% will be much lower than in competing jurisdictions. To provide fillip to toll manufacturing in India, I propose to provide exemption from income tax for 5 years to any non-resident who provides capital goods, equipment, or tooling to any toll manufacturer in a bonded zone. To encourage vast pool of global talent to work in India for a longer period of time, I propose to provide exemption to global, non-India sourced income of a non-resident expert for a stay period of 5 years under notified schemes. I propose to provide exemption from minimum alternate tax, the MAT, to all non-residents who pay tax on presumptive basis. Tax administration. I propose to constitute a joint committee of Ministry of Corporate Affairs and Central Board of Direct Taxes for incorporating the requirements of income computation and disclosure standards, the ICDS, in the Indian Accounting Standards, IND AS itself. Separate accounting requirement based on ICDS will be done away with from the tax year 27-28. To support Prime Minister Modi's vision of homegrown accounting and advisory firms to become global leaders, I propose to rationalize the definition of accountant for the purposes of safe harbor rules. Other tax proposals. Change in taxation of buyback was brought in to address the improper use of buyback route by promoters. In the interest of minority shareholders, I propose to tax buyback for all types of shareholders as capital gains. However, to disincentivize misuse of tax arbitrage, promoters will pay an additional buyback tax. This will make effective tax 22% for corporate promoters. For non-corporate promoters, the effective tax will be 30%. TCS rate for sellers of specific goods, namely alcoholic liquor, scrap, and minerals, will be rationalized to 2%, and that on tendu leaves will be reduced from 5% to 2%. I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. We reformed the taxation landscape for corporates in 2019 by providing them a simplified regime with lower tax rate so that they could productively focus on business rather than on claim of deductions and exemptions. To encourage companies to shift to the new regime, set off of brought forward MAT credit, minimum alternate tax credit, is proposed to be allowed to companies only in the new regime.
Set off using available MAT credit is proposed to be allowed to an extent of 1/4 of the tax liability in the new regime. MAT is proposed to be made final tax, so there will be no further credit accumulation from 1st April 2026. In line with this change, the rate of final tax is being reduced to 14% from the current MAT rate of 15%. The brought forward MAT credit of taxpayers accumulated till 30th March 2026 will continue to be available to them for set-off as above. Indirect taxes. I shall now take up proposals related to indirect taxes. My proposals for customs and central excise aim to further simplify the tariff structure, support domestic manufacturing, promote export competitiveness, and correct inversion in duty. To continue weeding out long-continuing customs duty exemptions, I propose to remove certain exemptions on items which are being manufactured in India or where the imports are negligible. Similarly, to further simplify the process of ascertaining the rate of duty applicable on a particular item, I propose to incorporate certain effective rates in various customs notifications to the tariff schedule itself. I shall now take up sector-specific proposals. Promotion of exports of marine, leather, and textile products. I propose to increase the limit for duty-free imports of specified inputs used for processing seafoods for export from the current 1% to 3% of FOB value of the previous year's export turnover. I also propose to allow duty-free imports of specified inputs, which is currently available for exports of leather or synthetic footwear, to exports of shoe uppers as well. I propose to extend the time period for export of final product from the existing 6 months to 1 year for exporters of leather or textile garments, leather or synthetic footwear, and other leather products. Energy transition and security. I propose to extend the basic customs duty exemption given to capital goods used for manufacturing lithium-ion cells for batteries to those used for manufacturing lithium-ion cells for battery energy storage systems also. I propose to exempt basic customs duty on import of sodium antimonate for use in manufacture of solar glass. Nuclear power. I propose to extend the existing basic customs duty exemption on imports of goods required for nuclear power projects till the year 2035 and expand it for all nuclear plants irrespective of their capacity. Critical minerals. It is proposed to provide basic customs duty exemption to the import of capital goods required for the processing of critical minerals in India. Biogas blended CNG. I propose to exclude the entire value of biogas while calculating the central excise duty payable on biogas blended CNG. Civil and defense aviation. I propose to exempt basic customs duty on components and parts required for the manufacture of civilian training and other aircrafts. It is proposed to exempt basic customs duty on raw materials imported for the manufacture of parts of aircraft to be used in maintenance, repair, or overall requirements by units in the defense sector. Electronics. To deepen value addition in the consumer electronics sector, I propose to exempt basic customs duty on specified parts used in the manufacture of microwave ovens.
special economic zone to address the concerns arising about utilization of capacity by manufacturing units in the special economic zones due to global trade disruptions. I propose as a special one-time measure to facilitate sales by eligible manufacturing units in SEZs to the domestic tariff area at concessional rates of duty. The quantity of such sales will be limited to a prescribed proportion of their exports. Necessary regulatory changes will be undertaken to operationalize the measures while ensuring level playing field for the units working in the DTA. Ease of living. To rationalize the customs duty structure for goods imported for personal use, I propose to reduce the tariff rate on all dutiable goods imported for personal use from 20% to 10%. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines, and food for special medical purposes used in their treatment. Customs process. India's role and share in the global trade is poised for a major leap in line with our ambition and journey towards Vikasit Bharat. In this regard, I propose many measures for custom processes to have minimal intervention for smoother and faster movement of goods and greater certainty to the trade. Trust-based systems. I propose to enhance duty deferral period for Tier 2 and Tier 3 authorized economic operators, known as AEOs, from 15 days to 30 days. I propose to provide eligible manufacturer importers the same duty deferral facility. This should encourage them to get themselves accredited as a full-fledged Tier 3 AEO in due course. To provide greater certainty and for better business planning, I propose to extend validity period of advance ruling binding on customs from the present 3 years to 5 years. In the spirit of the whole of government approach, government agencies will be encouraged to leverage AEO accreditation for preferential treatment in clearing their cargo. Regular importers with trusted long-standing supply chains will be recognized in the risk system so that the need for verification of their cargo every time can be minimized. Export cargo using electronic sealing. Export cargo using electronic sealing will be provided through clearance from the factory premises to the ship. For import of goods not needing any compliance, filing of bill of entry by a trusted importer and arrival of goods will automatically notify customs for completing their clearance formalities. This will enable goods to be released immediately on arrival. The customs warehouse framework will be transformed into a warehouse operator-centric system with a self-declarations, electronic tracking, and risk-based audit. These reforms will move away from the current system of officer-dependent approvals and reduce transaction delays and compliance costs. Ease of doing business. Approvals required for cargo clearance from various government agencies will be seamlessly processed through a single and interconnected digital window by the end of the financial year. Processes involved in clearance of food, drugs, plant, and animal and wildlife products, accounting for about 70% of interdicted cargo,
will be operationalized on this system by April 2026 itself. For goods not having any compliance requirement, clearance will be done by customs immediately after online registration is completed by the importer, subject to the payment of duty. Customs integrated system will be rolled out in 2 years as a single integrated and scalable platform for all customs processes. Utilization of non-intrusive scanning with advanced imaging and AI technology for risk assessment will be expanded in a phased manner with the objective to scan every container across all the major ports. New export opportunities to support Indian fishermen to fully harness the economic value of marine resources beyond our territorial waters. The following measures will be taken. A. Fish catch by an Indian fishing vessel in exclusive economic zone or on the high seas will be made free of duty. Landing of such fish on foreign port will be treated as export of goods. Safeguards will be put in place to prevent misuse during fish catch, transit, or transshipment. To support aspirations of India's small businesses, artisans, and startups to access global markets through e-commerce, I am pleased to announce complete removal of the current value cap of 10 lakh rupees per consignment on courier exports. In addition, handling of rejected and returned consignments will be improved with effective use of technology for identifying such consignments. I propose to revise provisions governing baggage clearance during international travel to address genuine concerns of passengers. The revised rules will enhance duty-free allowances in line with the present-day travel realities and provide clarity in temporary carriage of goods brought in or taken out. There are honest taxpayers who are willing to settle disputes by paying all their dues, but they get deterred due to negative connotation associated with penalty. They will now be able to close cases by paying an additional amount in lieu of penalty. Honorable Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Jai Hind. One and a half hours. आइटम नंबर 3 माननीय वित्त मंत्री जी। Item number 2, sir. 3. Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the following statements under Section 3, 1 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act of 2003. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. Item number 4, माननीय वित्त मंत्री जी। Sir, with your permission, I move for leave to introduce the Finance Bill 2026. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इस पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पूरे स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. माननीय सदस्यगण, आपको सूचित किया जाता है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की कॉपी पब्लिकेशन काउंटर पर ली जाती है। बजट भाषण और बजट से संबंधित दस्तावेज आपके मोबाइल फोन और मेंबर पोर्टल्स पर ही उपलब्ध है। सभा की कार्रवाई कल सोमवार दिनांक 2 फरवरी 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
Namaskar viewers, hello and welcome to this continuing coverage of the Union Budget 2026-27. I'm Tina Jha, with me is my colleague Manoj Verma. So you heard the Finance Minister Nirmala Sitharaman presenting the Union Budget 2026-27, also introducing the Finance Bill. She's become, in fact, she's made history today as she presented her 9th consecutive Union Budget under the leadership of Prime Minister Modi. This, viewers, is also the first time in India's fiscal history that the Union Budget has been presented on a Sunday. We'll discuss some of the proposals and the key highlights of this budget speech, which extended nearly 1.5 hours, some of the key announcements that the Finance Minister made. In fact, the proposals in the budget, she said, are aimed at boosting growth, meeting people's aspirations, most importantly, enabling inclusive development. So the key highlight of the budget 2026-27 is that India has set a lower fiscal deficit target and higher capex outlay for FY27 with a reforms push. Just to put it into numbers, for the financial year 2027, the capital expenditure has been set at 12.2 lakh crore rupees. The fiscal deficit target has been set at 4.3% of GDP in FY27. In fact, if you heard the Finance Minister, she said she fulfilled her commitment that she made in FY 2022 to reduce the fiscal deficit below 4.5% of the GDP. Also, in revised estimates 2025-26, the fiscal deficit is at 4.4% of the GDP. The debt to GDP ratio is estimated at 55.6% in budget estimates 2026-27 versus the 56.1% in revised estimates 25-26. FY27 expenditure is estimated at 53.5 lakh crore rupees. The revised estimates of expenditure in FY 2026 were 49.6 lakh crore rupees. So a significant jump there as far as the numbers are concerned. Also, FY 27 net market borrowing from the dated securities is estimated at 11.7 lakh crore rupees. The gross market borrowing is seen at 17.2 lakh crore rupees. The net tax receipts estimated at 28.7 lakh crore rupees in FY 27. We'll bring you charts and graphics related to it for you to understand better. These are just some of the numbers that we were able to pick up from the Finance Minister's speech. So in a few moments from now, our production team will be able to put out charts and graphics for you to understand better those numbers and a comparative data of how these numbers stand compared to the previous budgets. Also, the states, they will be getting 1.4 lakh crore rupees as the Finance Commission grants. These were about the important numbers, Manoj. Let's now quickly give our viewers a recap of some important announcements and statements that the Finance Minister spoke about, especially in terms of how this budget takes us closer and aligns it with our Viksit Bharat vision. जी बिल्कुल टीना जी, अगर आज के बजट की हम बात करें, जिस तरह निर्मला सीतारमण जी ने अपना बजट पेश किया है और 3 कर्तव्य खास तौर से बताए हैं सरकार के, और ये 3 कर्तव्य जो हैं वो विकसित भारत का एक रोड मैप सरकार ने प्रस्तुत किया है देश के सामने कि कैसे सरकार जो है देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी, उसको लेकर काम करेगी। साथ ही जो जन आकांक्षा हैं, मतलब जन आकांक्षाओं से मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, जो आम आदमी से जुड़ी पहलू हैं, उन पर कैसे काम करेगी। इसी प्रकार सरकार ने 3 अपने कर्तव्यों के साथ देश को विकसित भारत के रोड मैप पर ले जाने का अपनी इच्छा प्रकट इस बजट के माध्यम से निर्मला सीतारमण जी ने की है। जाहिर तौर पे बजट में गांव, गरीब, किसान सरकार की प्राथमिकता में है। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य को सरकार ने बूस्ट करने का काम किया है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सरकार का खासा फोकस रहा है। बायो फार्मा सेक्टर के लिए सरकार ने अपने खजाने का मुंह खोला है और सेमीकंडक्टर को लेकर भी सरकार ने कई महत्वपूर्ण ऐलान इसमें किए हैं। हम जो पॉइंट्स हैं बजट के, उन पे चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ टीना, और दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे कि इस बजट का संदेश क्या है, मायने क्या हैं। Certainly, as Manoj rightly said, the contour, the overview of the budget is that the Finance Minister, under the leadership of the Prime Minister, has proposed interventions in 6 areas. And the budget revolves around these 6 areas, which includes scaling up manufacturing is in 7 strategic and frontier sectors. The FM spoke about rejuvenating legacy industrial sectors, creating champion MSMEs, again, key driver of our growth. So special attention has been given to that sector
as well, also delivering a powerful push for infrastructure. So in addition to expanding some of the already existing schemes, there are several key announcements, new announcements that the finance minister has also made in this regard, ensuring long-term security and stability. And another key dimension that you will find in the budget is developing city economic regions. So we'll discuss with experts who are joining us in the studio. We'll also have industry leaders join us virtually to talk about what they think about the budget and, most importantly, how it aligns with our Viksit Bharat roadmap. Joining us are two guests in the studios. Let's begin the program by introducing them to you. Delighted to welcome Dr. Aman Agarwal, Director, Indian Institute of Finance, and Dr. Sabyasachi Saha, Associate Professor, RIS. Thank you, gentlemen, for joining us on the program. To begin with you, Professor Agarwal, how would you sum up the budget? Let's begin the program with that. No, I think the budget has laid down the path for a $5 trillion economy, and the Viksit Bharat program of the government of India in terms of introducing not only growth but also the growth which can be felt by the common man. I think almost all segments of the society have been touched upon. The capex has been kept almost consistent to bring in growth and the stability in the economy, and the fiscal prudence which this government has introduced for almost over a decade now is reaping fruits, as the Honorable Finance Minister also pointed out that her commitment has met grounds of keeping it below 4.5% and targeting further down going forward. I think the GDP numbers in the last 2 quarters have shown clearly that the 7.4% projected in the economic survey might even get surpassed if we are able to get a similar kind of a jump as we've seen in Q2, Q3 this year. In fact, crossing 7.5 if possible, because all the factors which are there are so positive, giving a positive rebounding effect. And in fact, the budget has laid down a pathway which industry across the globe and within the country looks upon for introducing investments in the country in different segments. And in my opinion, none of the segments, whether it is social sector, rural development, or agriculture, healthcare, education, you talk of a sector, it has been looked upon. Even from a macroeconomic perspective, she has contributed and given not only roads and railways, but even cities